ना ढूंढे तेरा दीवाना सपनों में रोज आई आ जिंदगी में आना तेरा ख्वाब मेरे ख्यालों की एक दिन तेरा दीवाना जिंदगी में आना. Okay, what is up Dad, क्या हाल है? वेलकम टू द स्ट्रीम. कैसे हो सबके सब? राम राम सारे भाइयों. Next patch is the last patch and now I'm getting flashback of Rena 6 and all stories. So much emotion for this game. I agree. वो रिकैप ही था ना चैट जो उस दिन था. Oh my God, Wuthering Webs, where are you? Oh, Wuthering Webs. यार एक मिनट को देखने दो रहा. गेंशिन तो खेल लूँगा. एंड क्या? ओह अच्छा ये तो उसका सिनेमैटिक है. इधर से क्या डाउनलोड किया गया था ना? Join us. Who are the harbingers upon us? To fate formidable. Oh dear, the setting. Or I will end you. I'm here to save you. What are you two plotting in Renacita? Combat makes the greatest warriors unsalvageable, fractured into pieces. This is chaos. Then I will sever that fate with my blade. Then I will sever. क्यूआन का दिखाया था इसमें. डैम क्यूआन की स्वॉर्ड कड़क लग रही है मेरे को. पता नहीं हाँ समहाउ क्योंकि वो उसके अंदर रखता है वो क्या जो भी बोलते हैं उसको ठक करके निकालता. ओह माय गॉड.
वो गाना बज ही रहे। ओके वी कैन स्टार्ट उधरिंग गेंशिन इम्पैक्ट। आज गेंशिन इम्पैक्ट खेलूंगा। एक सेकंड, मेरी स्ट्रीम दिख रही है ना सबको? आज खत्म कर दूंगा, कल से खेलूंगा। लाइक कर लेता हूँ खुद की स्ट्रीम को। Remember me. कृपया गाना आप बंद हो जाइए, कृपया करके। जो रीच डेड हो गई क्या मेरी? ओके हम इधर ही क्या करते हैं हर बार? वाई आर वी हियर? मतलब यहाँ क्या कर रहे हैं हम? अबे इंस्टाग्राम। तनवीर भाई को बोलता हूँ मैं खेल रहा, अब लॉगिन ना करें। ला 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 ला। अभी हम पे कितने 16 है, ठीक है 16 कटोला। व्हाट द फक, क्या हिला? कैमरा हिला क्या? सब कुछ तो चल रहा है। तो टुणुम क्या हुआ? तो हमारी काइंडली 40 41 42 की पिटी हो सकती है अगर मैं पुल करूंगा तो, है ना? तो इसीलिए मैं डायरेक्ट स्टोरी ही करता हूँ यार। मैं स्टोरी के लिए आ रहा हूँ, स्टोरी ही करता हूँ डायरेक्ट। डेलीज वेलीज तो करते रहूँगा क्योंकि कल फियरलेस कंप्लीट किया 330 सेकंड में। बैंकर आप लोग का हो कैसे रहा है फियरलेस? मैं तो हाई के ऊपर नहीं किया, मुझे तो प्रीमोस चाहिए थे बस, तो गेम मोड लैटरिंग लगा। आप क्या चास का है स्वप्निल भाई? Familiar faces identified. Our good friends. Whoa! Free manual labor detected. अरे फ्री मैनुअल लेबर व्हाट द फक ना। किससे किया फिर आपने? कौन कौन से कैरेक्टर्स से? स्वप्निल भाई वेलकम वेलकम। This is Sosi, Sergeant Major of the nearby Lightkeepers. He's Sergeant. stationed here in this town. इन लोगों ने मिक्स कर दी क्या स्टोरी? That means He is Flynn's superior, as far as position is considered. A pleasure to meet you all. This is the Traveler and Paimon, friends of ours. They're experienced adventurers who are new to Nodcry. hi there. Indeed. The sooner we can get it. 2 more wild hunt incursions have come sweeping in at different locations after the last one had started. Hasn't Flint's gone back to your HQ to ask for reinforcements? What? Huh. Yeah. That's what he said he was gonna.
He hasn't contacted me about that yet. As per standing orders, he should be leading a team to root out the Wild Hunt. But I haven't received any reports for a while now. Well, he does act outside the remit of his orders sometimes. I'm a superior, yes, but I wouldn't say I have much control over his actions. Hey, first boss C2 मूवी का अवे वैंडी लाना C2 मूवी का एस्को फिर एस्को स्कर्क बेनेट सेकंड बॉस लोमा C1 नीलो नाहिदा बारबरा थर्ड बॉस मीको फोरीना जिलोलिन क्रेजी यार स्वप्निल भाई C2 मूवी So, he made the call for. Hard to say. Contacting HQ is a tricky business. I should know, I've tried. They either refuse my Fearless requests max level outright होता है or क्या end up स्वप्निल भाई dragging their feet. हैं Fearless max level होता है क्या And all the while, we're the ones who have to deal with the Wild Hunt, which, by the way, can strike anywhere and not cry without warning. We need to send our personnel where they're needed most. A single missive will not... Flynn's understands this well enough, I'm sure. We usually sort our foes ahead of time into ones I that feel are like leaky Genshin भी we'll वही take कर care रहा of, है and ones that बुदरिंग we'll के भी target using the मेरे को cannon. लगता है अभी ना वैसे क्वेस्ट स्टोरी क्वेस्ट कैरेक्टर्स के बहुत कम आते हैं क्योंकि वो भी स्टोरी में ही इन्वॉल्व कर दे रहे हैं वर्थलेस 40 दिन का स्किन ना डायर से स्किन मिल ओ डायर लास्ट है ना फियरलेस सेकंड लास्ट है क्या I finished the preliminary dispatch work already, but this cannon... Okay. Hurry up, I know. Fix this, I know. You fix it if you're I know such cute a है hurry. यार That or कोई भी bring me कुछ some बोले snacks. This is tiring work over here. Could you at least tell me how long we'll be delayed? We're way past our scheduled firing time. मुझे जुकाम नहीं भी होगा ना तब भी मेरे को सूंघने की आदत होगी आज एज इफ लाइक मैं नशे कर रहा हूँ मेरा C2 अभी का C2 आरले C2 फोरीना C1 नीलो अभी C2 हो जाएगा डावस ओ भाई C2 नहीं था C2 नहीं करी आपने स्वप्निल भाई यार अब तो क्या ही जरूरत है पहले ही पूछ रहा हूँ पहले अब तो लौमा आ गई है fault for firing too often recently. Machines get overworked too, you know. Nah. You could try thinking about their feelings for what? Sorry, what? In layman's terms, this refers to wear and tear. As such, a machine is more liable to fail the unhappier it becomes. The exact probability here would be... अबे उसके मुंह गई मोजी All right. I'm not good at this stuff, I know that. But let me stress that we lightkeepers are the... And I'd say that was a good deal for you. You should thank the Krumkake craft shop. आई नो को डायलॉग स्किप करने का मन नहीं करता यार कि For making she you sounds such a cute huge भाई and एक्चुअली powerful- Do you even know how much it would have cost you if you bought all the parts legit and fresh off the assembly? Reminder, your future snack budget will have to be halved without the long-term commission payment, I know. Calculating a viable and cheaper option. Lavender melon candy. What? No! Absolutely not! Let me think, all right? It should take maybe 3 more hours? मैं यार कैंडीज के लिए कुछ भी कर सकती है क्या This place be crawling with more monsters than there are fungi and That might not be the concern you think it is. The monsters of the Wild Hunt are only active in the immediate vicinity of its attacks. They will not spread any further, on their own initiative at least. We Lightkeepers will also keep an eye on those areas, both to monitor the monsters and to prevent people from entering the cannon's blast radius. That said, I'm afraid I can't wait 3 hours before dispatching manpower to the locations that the cannon won't... And here's where my need for manual labor comes in. There are some checks I haven't finished. Wait, but we don't know a thing about this stuff. How much help will we be? You'll be fine. Whoa! This book is so heavy. Oh, I know You की can book use Beep Boop Pizza to run diagnostics on the cannon. This cannon with... So, it's manual. ये कैनन ठीक करना है क्या Be quick about this. We might just cut our time to fire down by a whole 2/3. I'll go with you. Nice.
So you check the outside and Anefa inside. Come find me in the control room once you're done. Instructions received. Please go about your. Hey, a little snacking will also improve my efficiency by 2/3. Conduct inspection. Aino's explanations for things that don't interest her are a bit... Isn't Beep Boopita just following us around? Sure doesn't seem as smart as she said it is. How are we even supposed to know what to check? There is probably some condition we haven't triggered. We might yet to be. I've watched Anefa perform routine repairs before. It seems some sort of maintenance port must first be found, and then this small robot will... Ah, so you're in the know. Now that I'm not so sure of. Works for Paimon. Works for Paimon. Is this it? Probably not. Or this one? Oh, ew. Stick. Music अच्छा है. That thing over there looks promising. Where? Oh, yeah! It does! Whoa! It's flying! Does that mean we got... So, Let me give it a try. Press the button to adjust Brigitta's height. Touch the light beam hands to the... Oh. अरे वाह. ना 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 ना. उसमें वो बना रहा है वो. क्या नाम है उसका? जो भी रोबोट वाली लड़की थी, एनेफा. wow, what do you know? Aino was right. Still, it's impressive how you figured things out right away. Paimon's up next, along with this stupidly heavy book. The matching result for this symbol is... check passed. Well, as they say, no new... Yeah, guess you're right. Just feels like we did all this stuff for nothing, that's all. All for nothing, nothing for all. ओ वो वहाँ जाना मुझे. वो पहुँच गया, अभी पहुँच भी गया. मतलब लेट्स गो. अच्छा है, खुद से तो ले आ रहे हैं एटलीस्ट. Paimon's getting the hang of this now. And this time... Huh? है. Why are you angry? Oh. We need to take note of the order in which his eye colors change. Oh. Purple, red... Hey, slow down! Paimon didn't catch that! Beep deep beep. What? So now we've got musical prompts too? Weren't you only supposed to be a... अब क्या करने का? What the heck? Alright, one final stop. Oh, ये खुद कर रहे हैं. I must say, you two have a talent for maintenance work. A bit shit. Good eye. Really, I'd have liked to share the load, but you were really getting into... Ugh. Couldn't you have mentioned that earlier? हो गया right? Easy baby, easy peasy pussy. What does that mean? Does the book say anything about it? A pictorial prompt this time. We gotta take note of the flashing patterns. One yellow flash, nothing for 2 seconds, then 2 yellow flashes means the components here are maintenance is the description of input mode isn't up. Phew. That was a... Yeah, good work indeed. यार अब आर्ट तो स्किप कर सकते हैं, मेंटेनेंस ही कर रहे हैं. हेल्प ब्रिगेडर. और फिर से
Okay. इसको मैप से बाहर फेंक दो साले को. Okay. Beep beep bob. Beep beep gawk gawk. Well, looks like we're all good. Oh. We can remove this thing now. Cannon में निकाल दी. No clue, frankly. But what? I'll go get the replacement component. We should be done once we. What do you think? You know what? Paimon took him for the stony type at first, but he's actually a pretty nice guy. Let's wait for him here, huh? Are your tasks complete? Yes, sir. Sosie's gone to get the replacement component. We'll be done here. Allow me to check against the recorded data. Yes, the cannon will generate immense recoil when fired. If this is not controlled, the firing platform will become misaligned. This part is designed to anchor the cannon and ensure accuracy. Huh. So, if the cannon isn't fixed in place, will it start spinning around like some kind of massive fire? A novel analogy, but an apt one. The large-scale damage that might this component is currently easily damaged. The materials are not up to par, and there are still some design flaws. Estimated waiting time remaining: 7 minutes. Yeah! Certainly. It will be ready shortly. Okay. Observation. Freshly baked krumkake results in the Eh. most efficient improvement. Thanks for the Microwave भी है क्या ये? thanks. Things went great over here too. Understood. And I'll inform the Ratniki stationed around. Thanks for your kind assistance. I better make a move. Righty then. See ya. Righty. This huge cannon's a real sight. That is correct. Pure, bright, and Sure. We did help fix it after all. It'd be weird if we didn't want to see it in action. Original thought paper before that. Oh yeah. Let's try our luck at the flagship. See? Just be sure not to miss my masterpiece in it. Masterpiece in Axon, no? Axon है. Damn, it looks good. Oh, यहाँ से है क्या इसका वो? Okay. 73, 29, 29. Is it just Paimon? Or are there more people here now? Oh, just as well. And maybe, just maybe, let's get some of their berries and fried meat too, huh? Oh, come on. Bukkad. Excuse me, are you guests? Ah, if you wish to return to your room while the banquet is on, please. No, we're not heading back to our room. Are we not allowed in here? That is correct. Only those invited to the banquet may enter. Our goal is to ensure that our regulars can enjoy peace of mind and comfort, so that they can speak freely with one another. Familiar with our ways already, I see. But here in Notcry, channels hold equal value to Mora. I am but a lowly employee, so you'll have to forgive my inability to help in this matter. It's fine. Can't be easy being you. Looks like we'll have to switch channels then. Never, right? Dori. अच्छा Curatorium does seem to... but if we ask her straight up, she'll likely squeeze us for all we're worth. Oh, Paimon's got a plan. Lauma got Never to help her prep some medicine, right? We'll be heading to Hisi Island later anyway to ask Lauma to help us use the moon marrow. Couldn't we deliver the medicine while we're... If Never doesn't mention a payment, we can cash our services in as a favor. If she does, then we can use it to haggle. The thought of Mora made it worth the effort of thinking up. Rev the engines!
I hate this bike, bhai. Hey, Black Cat, we're here. Hello, you two. What's up? Not much. Just here to say hi. Also, we'll be going to Hisi Island later, so we... How thoughtful of them. Bet they want something from me in return. बेटे तेज तो बहुत है यार नेफर. The faster the delivery, the better, naturally. And we're lacking free hands right now, so that would be a great help. Yehoda's gone to get the medicine, and she should be back any moment now. If you have nothing else to do, feel free to wait here. Don't mind if we do then. Thanks. Oh yes, I'm sure you've all heard about what's going on. Nasha Town's in turmoil, and right now everyone wants intel. Whether it's to strike it rich, save their lives, or escape... Ah, so you're busy making Mora. How nice. It's not all good news, I'm afraid. We're stretched so thin that our clients have taken to competing for our service. The price for taking priority slots has all but skyrocketed. In other words, we've had to... She cornered us right away. Did she guess what we really wanted from the start? If there's any... That doesn't sound too hard. Is that so? But... no. Forget I said anything. I mean, you're great heroes. How could I waste your precious time on... Is there now? You should have said so sooner. Far be it for me to extort you, of all people, for intel. But seeing as you so kind... What's there left for us to say here? More like our common perspective. Most who live here only wish to defend their own interests. But we are different, are we not? We both seek to resolve the chaos that the wild... Or like make a profit off the wild hunt. Paimon doesn't believe a word she said. Dissatisfying. The number of commissions over at the Adventurers Guild spikes during tumultuous times, too. Would you call taking those jobs for Mora? Well, We might squeeze some advantage out of chaos, but equally, chaos could uproot everything we've built at any time. Such is the and what business would there be left should it end in some great slaughter, or put to flight many who call Nasha Town their... And as I understand, the two of you are here in Nodcry to follow a trail of clues yourself. well, yeah. In that case, we should keep Nodcry the paradise people say it is. At least, you must understand. No force exists here that would inspire unconditional unity amongst all parties. After that incident with Lauma, I'm inclined to believe you. Your selflessness is admirable, to be sure, though it's rare for a reason, kid. Kid. Just a shame that our mysterious phantom has hidden itself well. Between that and its ability to shift shapes, it will no doubt... Really, I'd be all too glad to pass on any additional intel I gain. We make a good team, after all, don't you think? You front and center, me behind... That... A well-placed only, indeed, Paimon. Nothing is wholly divorced from profit of some kind. Wait, so you were ready to work with us from the start? Why, of course. In fact, I was wondering when I might bring this up the moment you enter. But... Hey, boss, I'm back. Huh? Indeed they are. In fact, they've volunteered to deliver the medicine to Lauma on our behalf. Really? Great! Got a few more places for you to visit, right? Huh? Haven't I already worked a few days' worth of overtime already? Well, we better get this medicine delivered. Huh? Surely not.
special medication from before wasn't so. Wait, that can't be. Let me see. It was raining back there, so could it have happened while I was resting at the store? Sorry, sorry, boss. Hey! Well then, any plans? If not, what say we go and... Oh, we were thinking of doing that, but we didn't get much out of it. The townspeople are a bit wary of us, and we can't get into the flagship right now. Ah, yes, the banquet is on today. Perfect timing. That... Huh? Can you get us an invitation? Oh, come now. What are we? Sticklers for the rules? Hola. ये ओ ऐसे बोलता है Hey, not a bad haul. Lady Nefer, a pleasure to see you. That's right. My apologies. Consider it my fault for not having explained the banquet's... Oh no, it was no trouble. Not even an invitation check? Oh. Paimon didn't realize Nefer was such a big shot. Guess channels really do take... Finally! हैं इसकी एबिलिटी है क्या I'm sure we're all having a good time, but I would like you all to meet a mysterious guest I invited for just this occasion. I give you tonight's special guest. Nice to meet you all. I'm sure that no more needs to be said about Mondstadt's wine industry. After all, the special drinks menu is being set before you as we speak. Now then, for a time... Ah, I see. A new face for the bar. And here I was thinking, that ain't a familiar face. Well, it's a rare occasion to be sure. Wanna order a glass? I spoke to the owner. The bar is all yours. The recipes are available for your perusal here. Not to worry. I've taken the liberty of removing the more challenge. How'd you set this all up so quick? Well, as long as you know what both sides need. The flagship already had planned. Demyan will assist you. Serving guests with drinks will be, of course. अबे अभी बारटेंडर बनवाएंगे हमको हैं Got it. We'll give... In the meantime, I'll go mingle with some of the guests who pique my interest. There'll mingle be a little event during the banquet's second half, by the way. See you then. यार Hello. How may... Good work. Now then. मुझे लेके भी जानी पड़ी ओए गाय Ever consider returning to Snezh? क्या ये Would I be killing myself with fright here if that was an option? No, thanks. अच्छा ये रोबोट लेके आता what the fuck is this Tell you what, I envy people like you. You're to sign up for time like a man in a leaking boat, soon to be food for the fish. I wouldn't come to this dump if there were any better place to be. Come now. Surely it isn't that bad. We've still got the light keepers. You trust them? I wouldn't. Wouldn't trust anyone, really. You're stuck with a wild hunt here. The Snezhians can't be bothered, the Lightkeepers can't spare the people, and everyone else?
They're a mess. I'd sooner put an ounce of faith into that cannon. Forget it. Let's just drink. Let's see if this new mixologist is worth the billing. Makes the sec अच्छा इनकी info लेनी है हम लोग मतलब Hello. बेसिक La 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 la. Choose caramel wine. Choose caramel. Good work. कैसे आ रहा भाई ये? Can't live life without a little spice. Bet you some people are just waiting for this place to fall further into chaos. You've got a plan for that then? Hard to say. But what I can say is that the situation in Nashitown will get out of hand if that cannon isn't fired soon. That gun's a symbol. The most solid proof that ordinary folks like us can stand up against the wild hunt. Okay. Wait. अबे ये भी स्किप कर दे देना चाहिए था ना यार ये तो जल्दी पढ़ सकता हूँ मैं Surely this town is still of value to those who control it. Of course, but that's all it is. Value. For us, though, there's no place but Nashitown. And we're putting its life and ours in their hands. I get what you mean. Let's just see how this plays out first. Seems like they're all talking about the cannon already. Guess that's why Sosie was so anxious. Hello. अब क्या है लेमन मिंट वाइन आइस तो डाले ही नहीं Good work. कलर भी दिया है भाई मुझे लगा फिर से पीला ही दे देंगे ना Oh, so this order was yours, huh? Indeed. So, any note? Ah, you two must be Nefer's friends. A pleasure to meet you. If you've got a moment, let's have a drink. Paimon doesn't recall there being any other orders right now. Then come, sit. Dimyon, 2 wildberry trails if you would. Without Hints is the name. I help out at the Rossum workshop in town. They usually put me in charge of making and repairing simple machines. Paimon's name is Paimon. Pleased to meet you. Anyway, help me keep an eye out, all right? Valuable intel will be suitably compensated. Oh, come on. Is that how it is between us? I mean, I wouldn't even have this job if it hadn't been for your help back then. So, you've known each other? That's right. I came to Nodcry with nothing at all. Would have starved on the streets if I hadn't met. She lent me money to study a craft, and even introduced me to Aino and the Voynich Guild, which is how I slowly carved out a living for myself. Huh. So never can? Well, I'd also say she needed a willing and able machinist at her disposal. Come now. Aino's talents are better spent on issues bigger than basic machine repair and component manufacturing. I did think myself a dab hand at such work at first, but compared to her, I might as well be a trainee who couldn't weld a wire to save his life. Got the scoldings to show. It took me a long while, but I finally got to the point where I could make my own machines, and even maintain some of Aino's relatively complex ones, like Kuvaki detectors or... He's the one responsible for maintaining Yehoda's robotic arm. Oh. Oh, speaking of that,
Didn't Sosie have a mechanical arm too? That's right, one of Ino's masterful designs. I could never design one of those in my life, but if you gave me its blueprint, I could hammer. Nowadays, I've got regular customers, which makes for a decent keep. Even got a kid, if you can believe it. I wouldn't have. Had you told me. On the flip side, being a family man means I can't just flee this place whenever I feel like it. So, I'm afraid I'm counting on you to help solve this. What? All the more reason to be. Oh, wait. Just another question that's been bothering me. Have you heard anything about people seeing I have heard of humanoid shapes being sighted. Most would think they'd lost their wits from fright if they started hallucinating. After all, does this have anything to do with our current wild hunt, correct? Perhaps. Perhaps not. All right, I get it. बोरिंग है पार्ट भाई. Leave. He's a social man. You can often find him here chatting with. Since he's never heard of the wild hunt exhibiting the power to imitate familiar faces. Huh. That does sound worth noting. How about we go talk to a few more people? A good idea. And one our upcoming activity will facilitate. Let me come. Come back to the bar. Yazin. Thank you for waiting, everyone. Finally. Come on, let's go try our hand. Rowlet Showdown. Joining us, new guy? No, you won't. The one who'll be mixing the roulette special has to take part. Those are the rules. But... That's more like it. Since we have a new friend with us today, let me go. The wheel before you is divided into an inner and outer circle. Participants must take turns to spin the pointer of the inner circle. Whatever beverage it stops at, our lucky contestant will drink. The drinks are divided into juice, tea, and alcohol. With that last further divided into 3 levels, spin your way to a non-alcoholic beverage, and you'll score no points. Otherwise, you get 1 to 3 based on alcohol content. During a round of drinking, one participant may choose another with less points than them and pose a question, which the other party must then answer. This sounds like it might favor those who score higher, but push your luck and you might not recall any answers you were given the next day. Defeats the purpose, wouldn't you say? And that's why the person mixing the drinks has to take part. You know, just in case they decide to pour heavy, then sit back and watch the show. Okay. Not that our newcomer looks like the drinking type. Either way, looks like we're in for a show. Anything you drink will be replenished. And additionally, I have decided to sponsor a single serving of Dark Horse. What? Do my ears deceive me? A chance to drink Dark Horse and not cry? Dark Horse. Guess we'll have to take part now. Indeed. The Dark Horse could be yours to enjoy, so long as your luck holds. And if our lucky winner can drain the whole serving in one go, they will gain the right to ask everyone a question, regardless of their score. High risk, high reward. Let's get... Now, if there are no other questions, let us begin. Allow me to get the ball rolling. Intensity 3. Looks like I'll have to put my back into it today. Let's go! Wow! Oh, my turn. All right, man, fess up. You've been making a killing lately. Where's it all? Hey, bro. I heard you met up with some big shot from the Voynich Guild. Mind introducing? इनको दारू पिलाते जा रहे हैं लोग. A normal drink, huh? We've reached the final round of the Roulette Showdown. Let's see who gets the last laugh.
I gotta say, you monsters really know your alcohol. This recipes are super good. नशे से चढ़ गई ओए You're up. Whoa! New face here just drew the dark horse. Bottoms up! Bottoms up! Hey, will you be alright? You wanna just give this one to Paimon? पाइमन शराब भी दिए क्या Whoa! He actually downed it in one. Nice job! No wonder you monsters have such a reputation. Me? Well, what do you think? Monsters, of course. Absolutely. If there was something else, I didn't stop to see it. Just took off as fast as I could. Oh, and guess who showed up just as I'd gotten out of there? Those good-for-nothing rat. If my luck had been just a little worse, they'd have found nothing but my corpse. Or whatever. Either way, there's nothing in there you... I see some downcast faces. Why, have we all hit our limit? Ha! Says who? Because you didn't drink. In that case, let me raise another glass. To a blast of a showdown, and... Hello, sir. Lady Nefer दरवा बना दिया है दरवा Could you deliver it to her? Are they playing? Same as usual then? One die, 100,000. I'm not here to do business with you. One die Come now, I've already ordered us drinks. Or are you looking to add another line to your... Oh. So, let's go over this again. What are we even doing here? I can give you 3 things. The features of the Wild Hunt, the exact locations where it has appeared, and the intel we've received from the Lightkeepers. The Wild Hunt is in fact a phenomenon linked to abyssal power. Fog and monsters follow in its wake, posing a lethal... On the flip side, these monsters cannot leave the fog. We already know all that. Fair enough. Here's a map of current Wild Hunt anomalies that I snagged from the Lightkeepers, including the... Oi the map A lot. We've never seen anything like this either. That's not enough. 4 dice. Cool it, all right? I'm not done. Now, the Lightkeepers don't want you to know this, but weirdly enough, more Wild Hunt sites have disappeared than their involvement would indicate. Isn't that normal? They're not the only ones fighting the Wild Hunt after all. Adventurers do that too. And maybe some just go poof by themselves. I'd agree. And really, we've always had a small, stable discrepancy between reported anti-Wild Hunt ops and anomalies cleared. That variance has become a gulf lately. What could that even mean? I've got 2 theories. One, that some new force is clearing the Wild Hunt out in secret. 2 Or 2,
that some Ratniki are not reporting the work they do. The odds of the former happening is low. Not many organizations can even engage the Wild Hunt. Now, if you're interested, I'd recommend following the Paimon doesn't really... Now that's what I call interesting intel. No wonder you've been doing well for yourself lately. Please, stop. This... Oh, stop that. Why, people might start thinking, let me give you an opportunity instead. Out of respect for your independent intelligence gathering. An answer, have you heard of people seeing familiar faces within a Wild Hunt anomaly? Or No, nothing like that. Nothing at all. Nothing at all, hmm? Not even for 50,000 Mora? Either you... Hey! No means no, all right? This is about my dignity as an... Okay. Well, that puts me... You really are the... And you've learned quite well. Go on, then. I'll swing by... Ugh. Never, भाई. So, you're his थोड़ी सी भी तगड़ी है तो कुछ ज़्यादा ही. I am. He's resold my intel quite a few times now, pocketing the difference afterwards. Rather, as luck would have it, he would only purchase information from me when he was just about done negotiating with his buyer. So I arranged a little something just for him. Ooh. Oh, I was downright beneficent in charging for that betrayal. It was more about the... In any case, I believe that's all we'll get. Dun, 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 dun. What the heck? I thought he exited. Most of our intel seems quite dispersed, so... Well, first, no one else has seen that weird phantom, apart from our encounter on Indeed. And we have that from multiple... What in Tibet could that phantom be planning? Agreed. Instances of the Wild Hunt afflicting Nodcry in general have increased in... What you encountered must have been something special. With our master... In which case, two questions arise. Who is this master? I'll continue investigating along these two lines. We can reconvene again. I'm back! Oh, आ गई. Luckily, the store owner kept the medicine bottle I left on the table safe for me. Here you go. Oh. Thanks a bunch, Yehoda. Oh no, I've got work to do later. And anyway, I was watching it the whole way back, praying it wouldn't fire. Not until I got back, you know. Huh. So you're interested in that big gun? Of course. I mean, just think about it. Something that size is bound to be comprised of thousands, even tens of thousands of parts, fused in such a way that it can operate smoothly and fire off. Isn't that just so cool? It has been a while since the last time it fired. Go on, feel free to go watch. Work can... Thanks, boss. Anyway, y'all wanna come? It'll be might as well. Fruits of our labor and everything, you know? Woohoo! Let's go! Okay, सच फायर करने वाला है क्या? मैंने भी देखना है. चलो. कितना जल्द बड़ा ब्लास्ट कर लेगी. What a crowd! People seem pretty excited too. Oh, for sure. And even if that wasn't how it worked, just listen to how it roars. If that isn't power, I don't know what is. Oh, if only... Hey, don't think like that. Really? Okay, करने वाला है क्या? Hey, look! It's starting! Wild Hunt, it is. Okay. Oh. अच्छा इससे मारेगा क्या? मुझे लगा जो आगे था उससे मारेगा. Oh damn, that's huge chat. ये एनो ने बनाई है.
बस इतना ही. Nice one. Finally, all fixed up. Nothing to fear now. Awesome! Whew. That sure was powerful. And pretty dazzling, too. I feel so... You know, Paimon's been wondering, if you're so interested in machines... That's what we call drawing a line between your work and I've got some mechanical talents, sure. But this job I have now, no one can do it but me. Not even... Anyway, gotta go. See you later. Says the person... मानना पड़ेगा भाई इन लोगों को ना. Looks like the crowd's breaking up They as have well. a very low budget for a cutscene. Hey, not a bad haul. EC Island oh 75 हो गया यार काफी है एक्चुअली. यहाँ पे हूँ तो डेली कलेक्ट करके ही जाता हूँ. Thank you for Add Astra. Hey, जहूदा कहाँ से आ गया अचानक से? Add Astra. मैंने कोई क्वेस्ट स्टार्ट कर दी लग रहा है. Dear Miss Yehuda, if you manage to return the object of your next commission intact, then I assure you your reward will be paid in full. Might I also... The master... That woman... The fixer who protects all of Nasha Town. Regardless... I know. Perhaps you could... The traveler, but... ओ मैंने कुछ कर दिया पता नहीं. अच्छा मैंने कुछ तो किया जैट पता नहीं क्या किया. Let's see now. What's changed since we were gone? Yeah, if anything, looks... Hey there, Lauma! We're back! How have things been these past few days? Hi, hello Phoenix bhai, what's up? The cleanup work has been much more complicated than I expected. Solving problems that have built, I believe it will take a few weeks more. Fortunately, those who remained appear to have shaken off the initial confusion and are becoming more Hello, proactive what's by the up day. Phoenix bhai, कैसे हो? Fortunately, those who remain... Okay. It's as if they've finally been forced to come face to face with... And it's all thanks... No, I should have. I've been focused on taking care of myself these past few days, so I'm in a good place. And since you're looking after the moon marrow for us, I should be able to help you investigate the truth of... Speaking of which, have you heard anything new about... I've tried asking around, but what about you? We haven't made much progress either. But... अब फ्लेंस की स्टोरी कर देंगे लोग यार. I think I've got the gist. So did you got Lauma? I mean, I'm Sounds kitching. like you've got your work cut out for you too. Don't forget to I'm take care still of yourselves. trying for Lauma. अभी मेरे कितने 25 की पीडी है, but I have 16 pulls. So I'm finishing this story right now. I'll get 560 something from here, and after that I'll complete the event. I'll get 900 from there. So I guess by the end of the patch, maybe I can get her. I'm just collecting pulls right now. I don't know. In any case, मून मैरो. ओके हमारे पास्ट में देखेगी क्या? अभी देखेगी क्या? I guess so. What do you see? Okay, is that our spaceship? This is not gray. This all looks familiar. Okay. Is that the shooting star in the sky? No, wait, that's our spaceship. Okay. Is it over already?
इतनी पावर थी क्या? This appears to have occurred a long, long time ago. The memories I sensed are highly turbulent and disordered. So that is all my power allows me to discern. I'm saving for flames and I hope I won't lose my 50-50. I'm sure you will not. Hope you win 50-50 brother. मैं फ्लिंस निकाल नहीं सकता यार, क्योंकि फ्लिंस के लिए शायद से एनएफा चाहिए ना, राइट फिनिक्स भाई? एनएफा नहीं है मेरे पास. And F2P sucks by in this game, to be honest. ओह लोनाटार भाई, ये कितना क्रेजी लगता है लोनाटार भाई. क्यूट सा एकदम. I got an FA, that's why I'm pulling flames and man she's broken. Oh, यहाँ पे I remember her mentioning that she wanted to use the moon marrow to restore some of her power. I know. Yeah, we should go see her and see if we can help her. I'll leave that in your hands then. Oh wait, here you go. This is the medicine you asked security. Also, if I may, I have a feeling that Kutar might be able to help you get a more detailed glimpse at the. Oh, that's true. She's the Kutar after all. Yo, तनवीर भाई क्या हाल है? We best check if she's doing okay first. See you later then. भाई बस यार इंटर वो ना कर दे यार, गेट कीप ना करे बॉसेस. मैं ऑलरेडी अनॉय हो गया था नेट लेन के बॉस से. बाकी तो एवरीथिंग इज गुड. कलेक्ट कर ले रहा हूँ, मिले ना मिले लोमा. Who knows भाई. Currently I'm at mid game. Yeah, I'm 2 months. अच्छा, okay. 2 month old player. My AR is 48 right now, and my team is NFA main DPS, Bona, Hydro, and Ororan, and Sucrose currently at Fountain Quest. Oh, I see. Nice one. Progress. Enjoy the game, bye. Phoenix भाई, as you can. AR 60 के बाद कुछ नहीं रखा है गेम में. Once your content is like finished, everything, so you will just get bored, to be honest. You have to wait a lot for new content. मतलब एक महीना है ना. So enjoy the game currently. वर्ल्ड क्वेस्ट स्टोरी क्वेस्ट फॉर कैरेक्टर तो है ना, मतलब वर्ल्ड क्वेस्ट एंड स्टोरी क्वेस्ट फॉर कैरेक्टर तो है ना. अब पहले का कैसा सिस्टम था ना फिनिक्स भाई, जो पहले की सीन थी तो उस पर स्टोरी क्वेस्ट अलग आते थे, जैसे इसको फिर ये सब आपको देखा होगा. लेकिन अभी क्या हो रहा है कि अभी दे हैव मर्ज द, मतलब आर्कॉन क्वेस्ट के साथ ही मर्ज कर दिया इस पैच से शायद इन लोगों ने. अभी इसी पैच के लिए या अगले पैच के लिए भी काम आएगा, आई डोंट नो, बट फिलहाल तो ये हो गया. 2 महीने फाउंटेन वहाँ क्या ग्राइंडिंग है? अरे मैं कह रहा हूँ कि अपनी स्पेसिंग पे खेलियो, मजे करके खेलियो गेंशिन, और क्या. और AR 48 अभी तो जस्ट स्टार्टिंग ही है. ऐसा मेरी लाइट चली गई, मेरी लाइट चली गई. उधर मैं कैमरा बंद करता हूँ. Adventuring is right up my alley. I hope मेरा इन्वर्टर टैं ना करे. ओ आ गई लगा बस. वाओ, what a great. Quest continue करो ना. कर रहा. The thing is I'm in F12 PCM student, so don't play that. Oh, फिर तो सही है actually. That's also good.
work. Light up the blazing sun. हम खेलते तो एंजॉय करते होगे, बढ़िया है The rewards of an adventure worth remembering. भाई। ध्यान दो 12 पे ध्यान दो। फिनिक्स भाई कोई गल नहीं, ये तो आते जाते रहता है। अरे यार मेरा रेजन भी तो क्या पूरा माँ की आंख अपने आप होता है। फिजिक्स इज माय फेवरेट एंड मेन सब्जेक्ट, देन हाउ? क्या तुम्हारी ले लेगी? फिजिक्स फेवरेट है, क्रेजी भाई। लीस्ट फेवरेट क्या है, मतलब कि जो तुम्हें लगता है क्यों है ये सब्जेक्ट क्यों आ गया? यार एक्ट 2 की स्टार्टिंग बोर है टू बी ऑनेस्ट। एक्ट 2 का स्टार्ट बोर है। एक्ट 1 का सही था, ठीक था। CS फाइट बढ़िया बढ़िया। मैंने सुना काफी टफ सब्जेक्ट है। अरे वो डिफर करता है ना हर पर्सन टू पर्सन, कौन क्या पढ़ता है, She doesn't look so good. किसको कैसा अच्छा लगता है। Sorry for disturbing you, but it's like I'm returning to the. Wait, it's not that bad, is it? I sense the moon's power within. We got the moon marrow back from the Fatui. Can it help you in any way? And what do you require this time? lol Come on, don't even think about that. Right now, you gotta focus on getting better. गिव एंड टेक का ही हो रहा है बेचारी के साथ ना, कोलंबिना के साथ हमेशा से। मैथ्स नॉट दैट बिग ऑफ ए इशू इफ यू आर कंसिस्टेंट विद एवरीडे प्रैक्टिस। डैम सही है भाई। फिनिक्स भाई यू आर वेरी पॉजिटिव। वैसे बात सही है आपकी। फिर लाइट चले गई, क्या सीन है? I might need your assistance in the future. Oh, give me your hand. बैक टू अर्थ। Back to Earth. मैं तो बिना पढ़े पास हो गया था कॉमर्स। ले Your feet never left the ground. But anyway. भाई इसकी हील्स ऐसी की बना रखी होंगी। Significantly. -8 तक था बट 9th के बाद इमीडिएट इम्प्रूवमेंट, नो मोर रेक्टिफिकेशन। ओके गॉट इट। The moon within your body. It is as silent as a reflection in the water. I merely drew forth a ray of its light from the water. Enough to keep me tethered to the ground for now. I think I sense some other changes as well. That is the moon goddess's favor. All things I come into contact with will bear this mark. It is harmless and will fade up. Speaking of which, do you want to be the moon marrow's custodian now that you've got चलो your यार power back? It's supposed to be something that belongs to a god in any case, right? It is the remains of Arya, goddess of the eternal moon. ओह वैसे तुम्हारी नौला नौला क्यों कह रहा हूँ मैं, वैसे तुम्हारी लौमा निकल सकती है ना? हाउ ओल्ड आर यू? मुझसे पूछ रहे हैं या फिर तनवीर भाई से? मी 19, मैं 24 का हूँ यार,
24. So it does have to do with... Wait, what? Did you not know this already? Lauma just said it was different from the other fragments, and that she could sense divine power with it. And she is correct. When I drew that ray of moonlight from the marrow, I also drew some memories from within. Damn, I'm 16. हाँ, okay. और क्या हो गया? क्या हो गया तनवीर भाई? That is how I know that it belongs to the goddess of the eternal moon. अच्छा है. Oh. But Lauma also saw the past by using the moon marrow. Why didn't she see that? There were once 3 moons in the sky. Okay, the each story begins belonging now. to a goddess who ruled over it. But after the War of Funerary Flame, all 3 lay slain, and 2 of the 3 moons were shattered during the conflict. After Arya's death, her power coalesced into this moon marrow. The iridescent moon's remains have never been found. And while the Frost Moon's goddess died herself, her moon was never broken. Oh. As the prophecy stated, this moon would birth a new deity sooner or later. The entity the Frost Moon Scions call the Kujar. Prophecy that stated this moon would rebirth. अच्छा, would birth a new deity. अच्छा, new deity है. तो बिल्कुल ही है. अभी मेरी यूनो नहीं निकली है. What is your Genshin team? मेरी तो यार टीम्स ही टीम्स हैं अपने लिए. एक मॉवी का टीम है, एक नीलो टीम है, एक क्या है मेरे पास और किचिंग टीम है, आर्ले टीम है, रेडन टीम है, एंड क्या है और भी है यार, भूल रहा हूँ कुछ, पता नहीं, याद नहीं मेरे को. न्यूलेट फिर ने काजवा 11 न्यूलेट तो नहीं है मेरे पास यार. हाइड्रो डीपीएस नहीं है मेरे पास एक्चुअली. अगली बार से हाइड्रो डीपीएस लूंगा. मेरे अकाउंट में डेंड्रो और आई गेस पायरो शायद से ना, पता नहीं. किचिंग मे बी शी इज योर फेवरेट सी. हाँ भूल गए क्या? आई लव किचिंग. आई गेस C6 किचिंग होगी यार शायद, मजाक से हट के. मैंने किचिंग जब बफ हुई थी ना एग्रीवेट और ये सब वाले रिएक्शन में, तब मैंने बिल्ड करी थी. एंड अब तो C6 ही है बेसिकली. देखो आया. मिल गया. हेलो ला 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 ला. बेसिकली मैं पता नहीं कब से खेल रहा हूँ गेंशिन भी. बैंक यू फ्रॉम पंजाब और हरियाणा. गैस करो फिनिक्स भाई, आपको क्या लगता है मैं कहाँ से हूँ, या फिर कैसा लुक वाइज कहाँ से लगता हूँ मैं? अरे हाँ, मैं पूछना भूल गया था, क्यों नहीं निकाला न्यू विलेट. यार तनवीर भाई, उस टाइम ना मैं 2 अकाउंट खेलता था गेंशिन के पहले, जब तक वुदरिंग वेव्स नहीं आया था, एंड मैं बोर नहीं हुआ था गेंशिन के. तो मेरे को ना पहले हूताओ बहुत पसंद थी. तो क्या हुआ कि मेरे एक सब्सक्राइबर ने हूताओ वाला अकाउंट दिया, ठीक है, उस पर जोंगली थी, तो मैं उस अकाउंट पे भी खेलता था. फिर जो कैरेक्टर मैं इस अकाउंट पे निकालता था, मैं उस अकाउंट पे नहीं निकालता था. जो कैरेक्टर मैं उस अकाउंट में निकालता था, मैं इस अकाउंट में नहीं निकालता था, जैसा कि मैं वुदरिंग वेव्स में करता हूँ, ठीक है. और तो न्यू विलेट मैंने उस अकाउंट में निकाला था. लेकिन गेंशिन इतना बोर मारने लग गया मेरे को लास्ट में कि फिर 2 अकाउंट तो मैनेज ही नहीं होते थे, क्योंकि
क्वेस्ट इतने लंबे लंबे होते थे स्किप बटन के बिना, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं 2 अकाउंट खेल पाऊँ, तो इसीलिए दिक्कत है। न्यूलेट था मेरे पास, उस अकाउंट में फुरीना भी निकाली मैंने रिसेंटली, जो लास्ट बैनर आया था फुरीना का, 10 पुल में आ गई थी उस पर, तो बस वही। हरियाणा से लग रहे हो लुक भाई, फुल बल्टर पर आए। नहीं यार, उत्तराखंड से फिनिक्स भाई। ब्लेज़ू भाई, बिग पंखा, ओ उड़ गए क्रिक्स भाई, डैम यार। कल से नवरात्रि शुरू है चैट, कल से जिम जाएगा तुम्हारा भाई, जब तक यहाँ आया खटीमा में, जब तक घर पे हूँ। कल से शायद नया जिम खुलने वाला है हमारे उधर, दोस्तों क्या बोलते हैं उनका, तो वहाँ जाऊँगा। पैंतीलान पहचान वाले, सस्ते में जाऊँगा, 5 रुपये बोलूँगा बैंड। फुरीना मुझे भी 10 पुल में ही मिली थी, आपको वो अकाउंट भी दिखाऊंगा। Forget controlling it. Icon says that my power belongs to the frost moon, but it lies beyond the false sky, too distant from. Oh, okay. Okay. Basically, she is a frost moon base. Wow, I'm from UP. UP में कहाँ से हो फिनिक्स भाई? Forget controlling it, sensing it alone requires immense fun. Let Paimon count this up. We have the eternal moon's marrow with us. No one can find the iridescent moons. Does that mean you have the frost moon's marrow inside you then? ये हो सकता है? No. It can only form after the moon goddess is dead. Oh. Consider it a form of, you may as well ask if there are rocks on the moon. और हाँ, अर्ले के पीछे तुम पे रोल कर लो, देखता हूँ यार। मुझे बिल्ड तो काफ़ी के चेंज करने हैं मुझे ना तनवीर भाई। अभी वो बिल्ड चेंज करने से पहले मैं सोच रहा हूँ जो मेरे पास 4 स्टार कुछ कैरेक्टर्स हैं वो बिल्ड कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे को बार बार बहुत दिक्कत हो जाती है इसमें, क्या बोलते हैं, जो इमेजिनेरियम आता है हर एलिमेंट के उसमें। तो अब से मैं सारे बैनर पे पुल कर दूंगा, क्योंकि गेंशिन इतना वो है नहीं मेरा, है ना एंकर मेरे पे कुछ रेगुलर पुल्स रहने वाले हैं इसे। So you're saying that you represent the Frost Moon's power? From a small city, or call it a kind of oversized town, Lalitpur. Oh, okay. हमारे यहाँ से तो पास बरेली है, यूपी सबसे पास बरेली पड़ता है, पीलीभीत बरेली। Oh, so you are saying that you represent the... Yes. Now, a god with a gnosis is named an Archon. Since you bear the moon marrow, does that make you a moon goddess? You do not wish to become one? That's not really the problem here. Also, why are you so eager to anyway, never mind this becoming a moon goddess stuff for now. We're asking if we should return this moon marrow to you. Do you watch anime? Obviously भाई, अभी तो कम कर दिया थोड़ा, लेकिन हाँ मैंने शायद ज़िंदगी में एनिमे ही देखा है, मूवीज़ बहुत कम देखी है मैंने, बहुत कम ज़िंदगी मैंने एनिमे ही देखा है। मैं तो बहुत दूर रहता हूँ तुम लोगों से। तनवीर भाई आप कहाँ रहते हो? आप एमपी वगैरह में थे या कहाँ थे? I do not Huh? अरे यार शिट मैंने एक डायलॉग स्किप कर दिया। Anyway, never mind this becoming a moon goddess stuff for now. We are asking if we should return this moon marrow to you. I do not desire it. Huh? Nor does it desire to come to me. And what does that mean? When I came into contact with its power, I sensed a kind of... rejection. I can only guess that this is because I, too, am a moon goddess. 2 moons will not rise at the same time, let alone consume one another. Okay, Karnataka. Oh, a sign of affection देखा? My worst nightmare from... No. क्या है, रोम-कॉम है क्या ये? रोम-कॉम नहीं देखता मैं। अरे यहाँ कल डीमन स्लेयर देखने गया था, क्या मस्त एनिमेशन था। एनिमेशन नहीं था क्या मस्त? Guess it's stuck with me for now then. You sure that's gonna be okay? Lauma did say that you've hidden its power well, but the damselette sensed it just fine. And it's the wild hunt we're dealing with here.
not some run-of-the-mill enemy. The Wild Hunt? You speak of that phenomenon as if you were describing a person. Well, it sure looks like there's a person behind it all. Someone with a super clear goal, too. मूवी भी अच्छी थी. Mirror non-stop. That seems to ring a bell. Huh? My colleagues used to mention someone, back when I was still with the Fatui. He hailed from Conria, gaining abyssal power during the Cataclysm, and he had a consuming fixation on the moons. He had consuming fixations on the moon. Okay. Conria? Well, we don't know if the phantom we saw has anything to do with that, but the details kind of mad. I only know what others called him. The Ratchet of Rapier of Solnari. Oh! Huh. There was that title too. Wait a second. Dane mentioned him, didn't he? Does that mean that our enemy is Rarier, one of the 5? If that was the case, surely he'd be stronger than this, though. I have heard that he disappeared not long after the but when I asked my colleagues where he went, they replied. Why would they say that? The tale of his final fate has it that he fell into the moon's reflection, from which there can be no return. Shogu anime, I mean, it is wholesome for others, but I can't hate it because author left Oshi. Character hanging and my favorite anime is Assassin. Oh, Assassination Classroom अच्छा है काफ़ी. The Sign of Affection 2 2 एपिसोड पे ही ड्रॉप कर दिया था. अच्छा, मैंने कंप्लीट किया था फिर उससे साइड कर दिया था मेरी लिस्ट में. Wait, hold up, pause. There's just... I felt the same. They seemed to think that I should be the one who would know everything about the moons. But as I said, my prologue lies beyond the false skies. Oh. Either way, following his departure, the Wild Hunt situation worsened drastically, and it has since become a byword for abyssal disaster. The present phenomenon may have inherited the same title, but it far surpasses its past incarnation in both scale. Oh, just think that we're up against one of the infamous 5s. That's way too much for us to handle. That incident on Star Sand Shoal must have been luck then. Or maybe he wasn't giving it his all. Now the real question, how do you feel about solo leveling? About the best story? It's good. मांगा पढ़ी थी मैंने, बढ़िया लगी मुझे काफी. And even then, he still defeated Marionette. लेकिन एंड मोर टाइम. अच्छा सॉरी, तुम लोग के लिए स्पॉइल नहीं करता हूँ. माय बैड. अगर तुमने नहीं पढ़ी है तो. मैंने पूरी मानवा पढ़ी है. तनवीर भाई आपको क्या स्टोरी? आई एम आस्किंग स्टोरी अच्छी थी कहता रहा हूँ. मजा आया. एंड में थोड़ा सा वो हो गया मेरे को. Oh? What did you just say? Would you mind? वन वर्सेस वर्ल्ड भाई. पूरा वर्ल्ड उसी के अराउंड बिल्ड था लिटरली. मैंने भी पढ़ी है स्टोरी का लोर. एंड में वो टाइम रिवर्स कर देता है ना, और सब कुछ ठीक करने की वो करता है. मेरे को लगता है वहाँ पे यार थोड़ा सा दैट इज ऑल्सो अ गुड आउटकम. पर जो हो गया उसको होने, लेकिन हर कोई वही करता है इन दी एंड ना. किसी के पास अगर चॉइस भी होती तो डियर वंस को. तो बढ़िया लगा मेरे को जब मैंने पढ़ी थी वो. उसके बाद तो और भी पढ़ ली तो फिर और बढ़िया लगते गई. जैसे क्या नाम है उसका, ओमनिशियंट रीडर व्यू पॉइंट एंड तिबेत भी अच्छी थी है ना. अच्छी थी पर वही कोई और को दिखाया ही नहीं. हाँ मतलब टोटली फोकस उसमें जिनवू पे ही था. टोटल फोकस एक कैरेक्टर का जो पूरा इट वाज कि जिनवू का ही वर्ल्ड है वो, है ना. जिनवू इज द वर्ल्ड, ऐसा हो गया था. लेकिन सही थी. जब मैंने पढ़ी थी तब मेरे को काफ़ी बढ़िया लगी थी एक्चुअली. एंड इट वाज समथिंग कि लाइक चलो पावरफुल है. एंड आई वॉज एंजॉइंग इट अ लॉट स्टोरी वाइज भी देखा जाए तो. एंड जब वो आर्मी आती है तब तो भाई वो साहब, मेरे को सबसे बड़ा बढ़िया था तभी लगा था जब जिन्वू की आसमान से वो लोग प्रिपेयर होते हैं लड़ने के लिए और वहाँ से आर्मी आती है पुराने वाले
शैडो एम्परर की, या शैडो एम्परर बोलते हैं, किसको बोलते हैं पता नहीं मेरे को। स्टोरी के नाम पे मेरे पास कोई शब्द ना है। मेरे को अब तक की मेरी सबसे फेवरेट जो मेरे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से लगती है, जो मुझे अच्छा लगा सब कुछ उसमें, उसके कैरेक्टर डेवलपमेंट, हाउ इट वेंट, हाउ द वर्ल्ड बिल्डिंग वेंट, है ना, हाउ द विलन वेंट, वो लगती है मुझे गॉड ऑफ हाई स्कूल की मानवा। पढ़ी मैंने काफ़ी है, सब बढ़िया लगती है मुझे बहुत सी, लेकिन मेरे हिसाब से मेरे को लगता है गॉड ऑफ हाई स्कूल की मेरे लिए बहुत अच्छी थी वो। जिस हिसाब से मैं मानवा एंड स्टोरी को फील करता हूँ एंड रीड करता हूँ ना, तो मेरे को काफ़ी बढ़िया लगी थी। देयर वाज अ ड्रॉप अप एंड काफ़ी बढ़िया ड्रॉप अप था। टाइटल ही सोलो लेवलिंग है तो क्या ही बोलें। हाँ Did you just laugh? No. क्या है हम लोग? I mean, I don't hate solo leveling, but the thing I hate is its community, and I hope you also know that the reason I watched Real God of High School. Sorry. And I hope you also know that reason, and I watched and read God of High School for real. God of High School क्या ही फाइटिंग सीन था। पता है, सच बताओ तनवीर भाई, जो गॉड ऑफ हाई स्कूल की का एनिमे है ना, वो उतना मतलब मस्त हो रखा है, लेकिन उसके फिर भी वो इतना कंप्रेस करके दिखाया गया ना, मतलब इतने सारे चैप्टर्स के इतने उस पर, मतलब जब मानवा पड़ोगे दैट्स अ डिफरेंट फील भाई, मजाक सट के। पर इसे जब ड्रॉप कर दिया उन्होंने, क्या को ड्रॉप कर दिया, हाँ एनिमे ड्रॉप कर दिया ना शायद, लेकिन मानवा पढ़ो भाई, यू विल लव इट बाय तनवीर भाई, मजाक सट के, यू विल लव इट। तभी तो मेरी आईडीज का काफ़ी नाम, जैसे पहले मेरे को ना जो कैरेक्टर का थोड़ा पसंद आता है, लाइक साइड कैरेक्टर्स एंड भी ऐसे वैसे, तो बैंगर मैं उनके नाम रख लेता, जैसे बैंगर डजाई का रखता था मैं पहले, ठीक है, सेन को भी बढ़िया लगता था मेरे को। ऐसे नहीं कि कुछ बहुत फेमस नहीं, जो मतलब जिसके कैरेक्टर एंड उसका बहुत बढ़िया लगता था। तो मैंने जिन हुई, इसका नाम जिन हुई था क्या था पता नहीं इसका, पर उस तब से मैं जिन गेंडू रख दिया अपना नाम, आईडीज का नाम। गॉड ऑफ हाई स्कूल लिटरली काफ़ी बढ़िया लगी मुझे। She totally did. God of High School is my first anime to be honest, and also the anime which brought me in anime community. यार पता है फिनिक्स भाई, आपको एक बात बताऊं, अगर एनिमे कम्युनिटी के देखी जाएगी ना, एनिमे कम्युनिटी के चक्कर में मैंने अटैक ऑन टाइटन छोड़ दिया था, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि कम्युनिटी इज आइदर इट्स एनिमे आइदर इट्स गेमिंग, हर जगह की बहुत वाहियात का कम्युनिटी होती है सही में। जिनमोरी नहीं, उसका एक बॉडी डबल रहता है ना, बॉडी डबल क्या, हाँ, तो जो उसका डबल रहता है लास्ट में, उसको भी मतलब वो भी फील करता है, उसकी भी डेवलपमेंट बहुत अच्छी थी यार लिटरली, जो उसका क्लोन रहता है। जिन हुई नहीं था ना उसका नाम, पता नहीं कुछ तो था, जिन समथिंग था। पर मेरा फेवरेट ब्लू लॉक है, ब्लू लॉक भी बड़ी, ब्लू लॉक की भी डेवलपमेंट बहुत अच्छी है भाई, मजाक सट के। ब्लू लॉक की भी डेवलपमेंट ना, कैरेक्टर डेवलपमेंट मुझे बड़ा मज़ा आया, क्योंकि हर कैरेक्टर पे ऐसे ध्यान दे रखा है, एंड स्टोरी वैसे ही चल रही हो, ऐसा बोरिंग नहीं लगता हो, मज़ा आता भाई। जिन कैरेक्टर डेवलपमेंट एंड वर्ल्ड बिल्डिंग कुछ सपोज भाई बढ़िया होनी चाहिए मेरे ख्याल से। जिन होरी नहीं था यार, मैं भूल गया उसके क्लोन का नाम, एक मिनट। ब्लू लॉक की पूरी मांगा पड़ी है। मोरिजिन भाई, उसका दादाजी भी कहता था ना जिन तेजिन। भाई तनवीर भाई, आप पढ़ो एक बार गॉड ऑफ हाई स्कूल, तब देखना क्या मजा आता है भाई लिटरली।
ब्लू लॉक की मांगा तो मैं हर वीक फॉलो करता था, अभी बीच में कहाँ पे छोड़ी थी मैंने, क्योंकि मैं अब एक साथ बिंज रीड ही करूँगा वापस से। मैंने कहाँ पे छोड़ी थी पता है? जब काइजर, जब वापस से ये लोग नोवा की टीम में होते हैं, ठीक है, फाइनल मैच होता है शायद से वो, और उनके अगेंस्ट पे रिन वाले टीम वापस आती है शायद से, रिन और उसका भाई की ऐसे, और उस पे शायद से वो भी रहता है, वो किंग वो भी रहता है शायद, वहाँ तक पढ़ा है। जिनमोरी थोड़ी भाई जिनमोरी की स्टोरी मेरे को बहुत बढ़िया लगती है वो। Are you two on bad terms or something? एंड मैजिकल वॉरफेयर नहीं देखी मैंने, कौन सी है? मैंने रिसेंट टाइम में कम कर दिया यार, क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट हो रहा था मेरा। एकदम 24 साल का हूँ, यून हो रहा है इतना टाइम नहीं हो गया मेरे पास। ये लिस्ट पे डाली थी शायद मैंने, नहीं यार मैजिकल वॉरफेयर नहीं देखी मैंने। No. I simply imagined the put-out expression she must have worn in that moment. She seemed quite chic. Oh, she'll adjust soon enough. Okay, anyway, we've gotten off topic. Now that we know how dangerous the guy targeting the moon marrow is, you sure... If Fatui intelligence is to be believed, Rerir would prevail even if all of Nod Cry were to stand against him. Perhaps something restricts him. Before I decide, What do you need? do you think you'd be able to show me what happened when my sister and I arrived in Nodcry? I mean... Sure. That was quick. Oh. As I said, this to me is but a single ray of moonlight. Give me your hand. And ready yourself. हाँ आगे बढ़े, ब्लू लॉक की नई सीरीज चालू हुई है, ओके पढ़ेंगे। इट इज़ ऑल्सो क्लिफ हैंगर एंड क्लिफ हैंगर ड्रॉप एनिमे विच इज लेफ्ट हैंग। यार मुझे सबसे बंदा लगता है नो गेम नो लाइफ के लिए, दैट एनिमे इज ऑल्सो अ ग्रेट एनिमे लगता है मुझे तो भाई। उसका सीजन 2 चाहिए था, या फिर जो भी है उसका भी नहीं आने वाला, उसके शायद से कॉपीराइट या फिर समथिंग वो हो गया है कि कॉपी है या फिर समथिंग लाइक दैट किसी एनिमे। हाँ आगे बढ़ो, ब्लू लॉक की नई सीरीज चालू हुई है, पढ़ेंगे पढ़ेंगे यार। मुझे ना पता है चाहिए पेजेस एटलीस्ट एक एक पेज। मैं बहुत वेट करता था भाई, ब्लू लॉक हो गया, हफ्ते में एक दिन ब्लू लॉक का हो गया, फिर जुजुत्सु काइसन का वेट करता था, और ओमनिशिएंट रीडर व्यू पॉइंट का वेट करता था। डिबेट की तो उस टाइम ब्रेक पे गई थी, और एक दो का और वेट करता था, याद नहीं मेरे को। तो ऐसा रहता था, तो फिर जब ब्रेक पे रहने लगा ना तो मेरे को थोड़ा मैंने कम कर दिया। Which job do you do? I don't do job, Phoenix भाई। फिलहाल मैं YouTube स्ट्रीम वगैरह ही करता हूँ। ओके क्या हुआ था हमारे साथ? दिस इज व्हाट वी सॉ बिफोर। ये देख लो आप क्लिप, वो है ये, क्या बोलते हैं उसे, स्पॉयलर्स। इट सीम्स वी लैंडेड सेफली एट लीस्ट। यार हम लोग स्पेसशिप पे आए थे, व्हाट द हेक। अ लॉट ऑफ टाइम अपीयर्स टू हैव पास्ड। ओ फंगी वो लग गया है यहाँ पे। We are still inside the spaceship to think we were in there for so long. When did Lumine get out, I wonder? Wait, is that... Lumine तो साइड से आई? But how can that be? No one left the ship from the moment we landed. The door hasn't been opened yet. Where? Aether, come on. We have to leave this place. What? Hey, are you okay? Our spaceship. No one left the ship during that time, but Lumine found me from outside of it somehow. Any part-time work? No. कहाँ से पढ़ते हो? मैं तो ऑनलाइन पढ़ लेता हूँ सर्च करके, या फिर मांगा जोन में पढ़ता था, और क्या। But Lumine found me from outside it somehow. Huh? How would that even be? The secrets within memories are like cookie crumbs. Take a bite.
All right. I'll keep the moon marrow with me. Well, will you need my help? I could help you conceal the marrow. You could? Oh, that'd be great. Detecting it within you is already no easy task, but I can teach you to further like this. इसने क्या किया ये? माँ का जो गोटेड ऐप है ना, आए देन घर पे डांट पड़ती है ना, cause I won't hide, मुझे रोज गालियाँ पड़ती है। 12 वोल्ट फिनिक्स भाई, एक टाइम तक तो मुझे भी बहुत ज़्यादा पड़ी थी। आई वाज लाइक, है ना, लेकिन अब फोर्स नहीं करते मेरे घर वाले ज़्यादा चीज़ों को लेके, टू बी ऑनेस्ट। मतलब स्कूल टाइम पे तो करते ही थे कि डिसिप्लिन ये वो एंड ऑल, उसके बाद थोड़ा मैंने कहा खुद से करने दो यार कुछ, तो अभी ज़्यादा वो नहीं करते हैं। बोलते अभी भी हैं, लेकिन हाँ प्रेशर नहीं डालते। बाय बाय बाय। वो तो हर घर का रहता है, हर घर का। Can you sense it? स्टोरी होने के बाद आता हूँ। ओके, आपने कर ली? अभी कितनी बची है ये तो बता के जाओ तनवीर भाई। Looks pretty sturdy. Could probably be used in self-defense in a pit. Are you always here, Columbina? It's kind of dangerous out there, sure, but have you dislike strangers? Slightly better. Yeah, the Frost Moon Scions have changed since you last saw them. Who knows? You might actually like them. I will consider. I will consider it. मैं नहा के आता हूँ, मम्मी पापा दीदी। ओह लॉल, ठीक है अभी तुम्हारे लेट होगी। और है मतलब कितना 50% हुआ, 30% हुआ, 40% हुआ। वो सो गई वो। It wasn't much. The flowers here. They like guests like you. Oh my God, Silver Moon Hall, Salience Chronicle. Oh, ये वो है क्या? You can visit Silver Moon Hall from time to time and meet Damselate. From a certain time after completing the quest, your party will gain the new Moon's Embrace effect. When in Nordcry, your party's moon sign level will always be ascendant green. Additionally, after completing a certain number of quests, you can claim variety of other rewards. अच्छा ये वो वाला वो है क्या पेयर टाइप सेट जहाँ पे हमको रिवॉर्ड्स मिलते हैं? आई गेस सो, who knows? अरे चलने दो मैनू। Best let her rest. नहीं भाई, मेरी 12 PM पे तो गुड मॉर्निंग हुई। गुड ये लोग कुछ नया लेके आए हैं लग रहा है मुझे। हाँ आई थिंक सो, कुछ तो लेके आए हैं बड़वे। दैट समथिंग हैव बीन हियर। ये देखो विंग ग्लाइडर इधर पे है। ओ विंग ग्लाइडर लुक्स गुड भाई, टू बी ऑनेस्ट। ओ ये मेरा फेवरेट है। ये तो यार वो है। क्या करना है आफ्टर द फ्रॉम कंप्लीटिंग साइलेंस क्रोनिकल क्वेश्चन? अब बाद में देखूंगा ये तो मैं। बुंड विच अपनी कटाना धरते। मुझसे जो नजरें चुराने लगे हो, लगता है कोई और गली जाने लगे हो। ये यहाँ का रेपुटेशन है ना बेसिकली, देखा जाए तो। फुल कर दूं क्या तनवीर भाई, या आप करोगे? तनवीर भाई, तनवीर भाई अभी तो इवेंट की, ओ माय गॉड, इवेंट की स्टोरी कितनी बड़ी है? इवेंट की स्टोरी ज्यादा बड़ी है क्या? ला ला कर लो कर दूं? 10 पुल करता हूँ, फिर बाकी के 10 पुल के बाद ही। भाई प्लीज दे दो यार लौमा, अर्ली लौमा दे दो मैनू।
Please. Please. गोल्डन होती होती रह गया भाई। क्या करूं इसका मैं? बारबरा का है। What should I do of बारबरा? बारबरा तो किसी काम की भी नहीं है मेरी। कैम अभी भी नहीं आई यार। कन्वर्ट कर लेता हूँ। 8 हो गए 8। Adventure time. Bring it. Lauma. You relate the gist of your conversation. The Raker of Solnari. Let's keep this news confidential for the time being. But if this Rarier is as you describe, he will be a truly... Yeah. Things might be okay if everyone was willing to work Hello? together, but right now... चैट में 10 मिनट के लिए जाऊंगा ना, तुम लोग भी अपना हग्गी पॉटी पॉटी करके आओ जाओ। मतलब अभी नहीं जा रहा मैं ऑब्वियसली, पहले मैं 2-3 पार्ट कर दिया। If you don't stick together, we will be picked by... Exactly. Whatever the case, let's start by... As it happens, we have our What own is it? reasons to protect Not Cry. But even if we didn't, we'd never leave people... Thank you. The Frost Moon Scions will stand with you. In addition, I believe that the relationships between the winds of change are blowing. Whether our foe is the Fatui or this Raker, we must stand our... Let's see. Speaking of allies, the Krumkaki... Unifies to help us. no. चैट मेरे पे कितने हो गए मूनफॉल सिल्वर? लेट मी चेक। अगर मेरी आ जाती है ना गलती से लॉमा, ऑब्वियसली लॉमा 10 पुल गेम है ना। 36 की वीडियो हो गई है चैट मेरी। 36 34 172 हो गए हैं एक्चुअली। 160 ही चाहिए रहते हैं मेरे ख्याल से, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली। तो ये तो मैं बिल्ड कर ही लूंगा अब। एनो के हाउस में भी डायरेक्ट जा सकते हैं हम लोग। डैम, दैट लुक गुड। एक मिनट, मैं तो एनो के हाउस गया था, यहाँ से पास नहीं पड़ेगा। बदतमीज कहीं के, बदतमीज बंदर। एनो का हाउस देख रहे हो? Incoming. Friendly approach detected. Listen. We have got updates for about Wild Hunt. Threat level. Phew, doesn't matter if he's the Rahira Solnari or Solari or whatever. What? You were there when we fired it, right? If that isn't the kind of firepower that helps you sleep at night, I don't know what is. True, but the cannon only works against shambling monsters, right? What if Rarir's super... Well, we'll just get enough to go grab him and tie him down. What the heck? You're not taking this seriously at all, are you? Anyways, firepower is not a concern. See those canisters over there? That's all concentrated Kubaki, which we'll be shipping to Nasha Town. More than enough ammo in there to blast that Fatui research facility to bits in a single shot. Oh. You sure have been looking forward to this bat. Of course! This is gonna be the shot that shocks the world. All of Not Cry, heck, all of Snezhnaya will know my name once we're through. Oh. In that case, our firepower needs are in your hand. We'll continue to monitor the world. Sure. I know. There remains intel left on shared. Oh, right. Yeah. Since you're investigating the Wild Hunt, something... Remember that Sosi guy? The Ratnik in charge of firing the cannon? He's been found
dead in their organization. Wait, what? Didn't we just see him, like... Yeah, it's still new news. So, not many people are in the know. We were only informed because we'd worked... Oh, he seemed like a good guy. The data concurs. This gentleman appears to have been one of the most accomplished amongst the Lightkeepers, Sergeant Major. His character has also received commendation. Most would have lacked the motivation to... Oh, that makes Let me, could it be the environment is rear actually afraid of the cannon? Hey! What do you mean, either way? I'm not clued in on the details. Only Ratniki have been allowed on site to investigate the scene. You'll have to Got it. Let's go then. My tasks are incomplete. The last few batches of... Alright. Okay, हमारी जिम्मेदारी है. Yo, I know what's up. मैं आ रहा हूँ जैक, ठीक है? I'll be back in 20 minutes. 20 ज़्यादा बोल दिया तो मैंने. Back in 10 minutes. आ रही हूँ. एनो के साथ खड़े हो ना बुढ़िया. Here's to a life where the drinks keep flowing and the Mora keeps rolling.
Going into a trance is risky for most people, so don't get any ideas. I've read almost every novel from Yai Publishing House. Pretty normal, right? Here's to a life where the drinks keep flowing and the Mora keeps rolling. Going into a trance is risky for most people, so don't get any ideas.
I've read almost every novel from Yae Publishing House. Pretty normal, right? Here's to a life where the drinks keep flowing and the Mora keeps rolling. I've read almost every novel from Yae Publishing House. Pretty normal, right? Going into a trance is risky for most people, so don't get any ideas. Here's to a life where the drinks keep flowing and the Mora keeps rolling.
Going into a trance is risky for most people, so don't get any ideas. I've read almost every novel from Yai Publishing House. Pretty normal, right?
Going into a trance is risky for most people, so don't get any ideas. Where the drinks keep flowing and the mora keeps rolling. I've read almost every novel from Yai Publishing House. Pretty normal, right? Going into a trance is risky for most people, so don't get any ideas. हेलो चैट, हेलो माय बैड यार, बहुत देर हो गई। सॉरी डार्लिंग। कुशल भाई हो गया चैट में अभी भी? कुशल भाई ये कौन है? गिरा दिया मैंने। ये क्या क्रेन चल रहा भाई? चल रहा यार, ऐसे क्या करें? ब्लांडू FPS, सॉरी लूफी FPS ब्लांडू भाई, व्हाट्स अप? हेलो सिमर भाई, क्या हाल है? वेलकम टू स्ट्रीम। ये क्या क्रेन है? कल वाली वीडियो सिमर भाई आपको ऑटो डब में आई क्या है यार? कुशल भाई आगे चले गए ना। कुशल भाई थैंक यू सो मच यार फॉर 10 गिफ्टेड मेंबर्स यार, मींस अ लॉट। लव यू। मैं देखा 4 बंदे पार्टी में स्टोरी क्वेस्ट खेल रहा क्या, फिर याद आया वो मैं तो 3 ही होते। 1 मिनट आपने ड्रॉप कर दिया क्या गेंशिन? है बिल्कुल ड्रॉप कर दिया। हाँ भाई, पहले ऑटो डब स्टार्ट हुई थी, फिर चेंज कर दिया। फिर यार
मेरे को पहले समझ ही नहीं आया सिमर भाई ये क्या लिख रहे हैं ये आज, ये ब्ले हुई क्या जो भी था वो, व्हाट द फक इज ये क्या हुआ है? फिर मैंने सोचा कि YouTube का नोटिफिकेशन तो आया ही था। ब्लू भाई इसमें पायरो रेजिस्टेंस कितना है बे? इम्यून है बंदा। अभी भी कर सकता हूँ क्या चोदी है? इम्यून है यार। तो ज्यादा ही साउंड हो गई इसमें। भाई ये मार रही है, बताओ क्या नाम है इसका, इतलाली। मैं तो गांव आया था सुबह से, अब घर जा रहा जा। फिर ऑटो डब कैसे होता है वो पता नहीं यार, बाय डिफॉल्ट दे दिया हमने भयंकर। उसका वो मेल आया था कि यू आर एलिजिबल एंड नाउ भाई एलिजिबल खुद ही कर दिया हमने, एलिजिबल चूतियों ने। थोड़ा भी लाइक गोल गोल भाई। यू पार्टी आई एम बैक, वेलकम बैक फिनिक्स भाई। एक मिनट, कौन सा सिमर भाई आपकी आईडी है? सिमर भाई है ना? सिमर सामा थी आपकी शायद से, आपकी आईडी नहीं दिया है इसमें तो। व्हाट द फक, दोस्त नहीं थे क्या आप मेरे? जा फिर ऐसे बात करते हैं व्यूअर से। हाँ जा फिर। ले 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 अनफ्रेंड ठीक। अब भाई हो या तो ऑल्ट आईडी में हो गया, आप उस टाइम पे ऑल्ट आईडी खेलता ही नहीं हो यार भाई। यार झूठ मत बोला करो, देखो ठीक है आपने हटाया होगा मेरे को, या तो ये हो सकता है क्योंकि मैं तो गेंशिन पीछे छोड़ दिया था, तो देयर इज नो चांस कि मैं हटाऊं आपको, तो आपने मुझे हटाया होगा, ये हो सकता है भाई। बस मैं एक बंदा मांगा पड़ रहा है, उसके सामने चौड़ी मारना। मैंने तो ये पढ़ रखी है, बोल उससे ऐसे करके। यार ये तो मैंने पढ़ रखी है जो तुम पढ़ रहे हो। इजी फ्लेक्स कर दे उसके सामने, पूछेगा तो बताना मत, है ना? रुको कॉल आ रहा है कॉल आ रहा है बोलना उससे। अरे वो भूल जाएगा, दिल तोड़ी अभी। अरे मैंने नहीं किया यार सिमर भाई, आपने ऐड ही नहीं किया था मुझे, झूठ बोलते हो आप यार। This must be it. Oh, doesn't look like there's any. Should we go speak to the guard first? Might as well try squeezing blood from a Never. और अगर उस बंदे ने पूछ लिया उस मांगा से एक क्वेश्चन, देन कॉल आ रहा है, अभी बात कर रहा हूँ और इमीडिएटली नेगेटिव। ऐसे करना, 1 मिनट कॉल आ रहा है। I know, told you about this then? Before we start, shall we see if we've made the same guess? Indeed. Quicker than we thought as well. रे पता नहीं चल रहा कौन सी मांगा पड़ रहा है, तभी तो कह रहा हूँ ये तो मैंने पढ़ रखी है बोलना। Keep your eyes peeled for any तूने कौन सी clues पढ़ी है once we कोई get वैसे in. भी? No need to jump. But how are we supposed to? Just follow me. I'm sorry, but we're not open to guests right now. Sorry about that. They're here to investigate. All of them? The paperwork checks out. All right then. Enter. मैंने काफी पढ़ी हैं साले, बता कौन सी पढ़ी हैं? ना चल वो बोलेगा, पर भाई ये तो वॉलपेपर दिख रहा है कॉल के लोगों की जगह, शायद आपने फिंगरप्रिंट क्लिक कर दिया, ये एप्स तो दिख रहे हैं। ये क्वेस्ट कितने सालों बाद खत्म होगी रे? मुझे नहीं पता यार, माय ब्लड माय रूल, मुझे नहीं समझ आ रहा कितने सालों बाद होगी।
मेरे को तो लगता है हर डायलॉग के बाद आप थोड़ी देर बाद खत्म हो जाएगी, आप थोड़ी देर बाद खत्म हो जाएगी, जितना मुझे गेंशिन से एक्सपेक्टेशन है इनकी राइटिंग में। By a single piercing strike from a polearm. We have performed a preliminary sweep of the crime scene to facilitate investigation. No obvious signs of a violent डैमेज कर दिया इसको लग रहा है, क्लिंस ने मारा है। doors or windows. Entering unopposed. So at the moment, the most valuable lead we have is based on an eye, specifically that Flint's was seen entering and leaving this place in the time period when the crime most likely occurred. देखा मैंने कहा था ना फ्लिंस होगा चूतिया। गेंशिन्स नेवर एंडिंग भाई साहब इनका तो लिटरली मे बी 12 साल बाद 20 साल तक तो ये गेम खींचने वाले हैं। अरे छी बीजी रोमकॉम पढ़ रहा है। We have tried to contact him. रोमकॉम भी वैसे अपने उसमें बढ़िया जॉनरा है भाई। स्टेप मदर्स फ्रेंड पढ़, सीक्रेट क्लास। To be honest, I'm not particularly inclined to believe that this was an inside job. Flint's can come across a bit eccentric, but he does well in missions on the whole. अरे सब फैन बोल रहे थे कुछ करने को नहीं है तो ये लोग करो लंबी चौड़ी के। फीनिक्स भाई ये चीज़ कब से बोलते हैं, लंबी चौड़ी क्वेस्ट के लिए नहीं है वो जो फैंस बोलते हैं। माय बेबी विल फुल रोनोवा, ओ माय गॉड। अरे पर वेल नोन्ड भी नहीं लग रही कोई, तो वेल नोन्ड होने ज़रूरी है क्या? तूने नहीं पढ़ी तो चूतिए, कितनी अंडररेटेड कितनी बढ़िया बढ़िया रहती हैं। सीक्रेट क्लास पढ़ी है तूने? सीक्रेट क्लास He also had no disagreements with the sergeant major that we know of. So he lacks, but neither the eyewitness report nor the nature. Looks like there's not much else to dig up here. भाई रोमकॉम की बात हुई थी, ये रोमकॉम सीक्रेट क्लास रोमकॉम ही तो है। फिनिक्स भाई आपने पढ़ी है क्या? Disappeared without a trace. A sticky situation indeed. वेल नोन्ड कह रहा है, वेल नोन्ड भी तूने भी नहीं पढ़ी है साले, दूसरों को बोल रहा है वेल नोन्ड। भाई ये गलत मांगा है भाई, सीक्रेट क्लास ही तो है। We know that this Flint's could have been rarier in disguise. One of my favorite We है। lack the evidence to prove this to anyone else. अरे उसने वेल नोन पूछा ना तो वेल नोन बता रहा हूँ यार फिनिक्स भाई आप। अरे मेरे को वेबसाइट भी बताया उसके लिए। नोटी देहरादून साले, नोटी कौन सा नोट है देहरादून? Furthermore, Flint's has left us with many questions, all of which will require a reasonable explanation. Yeah, he said he would report back to headquarters, but it seems he hasn't. Let's approach the issue this way. First, we must determine our culprit. Was it Flint's or Rary? Yeah. What reason would Flint's have to murder Sosie anyway? चल घर जाके आता स्ट्रीम पे। अरे पढ़ना है तो सोए उनको पढ़ो, पढ़ लेंगे, नेट खत्म हो जाना है। None as far as I know. कर ले फिर, साले आईफोन चला रहा है लेकिन नेट की रंडी रोने अभी भी शर्म नहीं आ रही है। Rather than in Nasha Town. Yeah, they would have often gone out on missions together. Plenty of chances there. Yes, but there's one thing worth ये locked up पढ़ लो। noting here. Remember the पढ़े तो मैंने भी intel we काफी हैं। got back at the tavern? No one has ever seen a phantom that can take the form of other humans within the Wild Hunt. यार ये स्टोरी कब खत्म होगी हो रहा है मेरे को तो अब, to be honest. This means that he has been hesitant to abuse this ability. सेकंड हाफ बढ़िया होगा कहा था मेरे को, तो फर्स्ट हाफ बढ़िया लग रहा था, पता नहीं क्यों। अरे भाई आईफोन इज इक्वल टू EMI नाउ डेज। अरे लूफी के पापा बहुत अमीर है बहुत। What if you
bump into the person you're लूपी imitating EMI में along बात the नहीं way. करता, अभी देखना 10,000 की सुपर चैट करेगा। नेवर माइंड, मेंबरशिप ही नहीं है साले के पास। 10,000 की तो ज्यादा बोल दी मैंने, जो मेंबरशिप नहीं ले पा रहा है। Precisely. In other words, his goal must have been worth the risk, similar to how he came in disguise to obtain the moon marrow. He likely knew then that the real Flints would not appear and get in his way during this time. We'd have to ask Flints ourselves, I'm afraid. But we shouldn't jump to any conclusions here. We can't discount the possibility that he might, and there are other, less likely scenarios. For instance, Rarier may have already killed Flints long ago, and been living as him for some time now. Yes, that is our ticket to— Then we've got to find him before the light— Steady now. We've tracked him down to a beach north of Nasha Town. The Wild Hunt is present too, so we're putting— I'll have you know that this is top secret information. Don't worry, you'll receive a top-class reward in Oh my return. god! यार अब एक्शन होने वाला है मेरे ख्याल। अब तो थोड़ा एक्शन होना चाहिए, बहुत देर हो गई एक्शन में। You planning to do full time YouTube or any future job? फिलहाल तो फुल टाइम ही सोचा था, बट लग नहीं रहा है देख के। है ना 2-3 हज़ार सब्सक्राइबर वाले के क्या ही मिलता है। या तो मैं थोड़ा वीडियो प्रोडक्शन में ज़्यादा, मतलब थोड़ा वीडियो और शॉर्ट्स ज़्यादा निकालने लग जाऊँ तो कुछ हो सकता है। लेकिन काम जॉब तो एक पकड़नी पड़ेगी यार, मुझे एक जॉब तो पकड़नी पड़ेगी। साला डिसलाइक कौन मार देता है भाई शॉर्ट वर्ड में। अरे बड़े मालिक इतनी सुबह सुबह स्ट्रीमिंग, हाँ यार ये स्टोरी कंप्लीट करनी है, फिर सोचा था यूनो गाइड भी बना ही देता हूँ यार। राहुल भाई यार वीडियो में जाओ यार, कमेंट करो, थोड़ी रीच बढ़वाओ यार, क्या कर रहे हो। वीडियो देख लो कि क्या पता हेल्पफुल होए। खैर तो निकाल ही नहीं रहा यूनो, बट देख ले फिर भी। लौमा मिल गई नहीं ना, लौमा की गाइड थोड़ी बनाऊंगा, गेंशिन गाइड्स नहीं बनाता हूँ, फ्यूचर में देखेंगे। नो ही व्हाट्सअप, क्या हाल है आर्टेमस? ऐसा है किचिंग मिली वीडियो, कौन सी वीडियो बैन करो यूनो हूँ, देख यार जाके भाई। Oh, I was just imagining how Views बढ़ा यार satisfying मेरे। that would feel. नहीं करेंगे But I'm कमेंट, afraid this revelation would only यही stir तो up more चाहते हो तुम, chaos. यही तो चाहते हो, चीटिंग करते हो तुम Setting लोग। aside the matter of evidence, some may trust Flint's on our account, whereas others would suspect him on account of his behavior. पर ये ना है कौन? अभी तेरा अकाउंट का आईडी पासवर्ड है मेरे पास वैसे, खैर तेरे अकाउंट में पुल नहीं होंगे, लेकिन मुझे पता है कौन हार साला। Tossing him into a swirling tumult of public opinion and think about it. Once people learn that he can masquerade as those they trust, would they continue to welcome friends into their homes with some unease grips the hearts of those in Nasha Town? Yeah, you're right. You've really thought of everything. Indeed. But just in case, let me stress once more. We should neither be excessively afraid of Rarier, nor trust in Flints too lightly. क्या करेगा अकाउंट पास लेके टॉप अप कर रहा है? हाँ ये तो सही ब्लेजू बोल रहा था, ये ब्लेजू को। अच्छा तुमने तो किया था यार, मजा ही यार, तुमने तो किया। This light source is of special lightkeeper design. It provides illumination within Wild Hunt anomalies and All right. We'll have to deal with that mess too. Yeah, this will be important. You're welcome. Hey! अरे यार ऑटो डब कैसे ऑन हो गया, मैं बंद कैसे करूँ, अब मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। क्या चोरी आपकी है? आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल हमें। मैं ऑलवेज देयर फॉर यू, थैंक यू यार आर्टेमस। हाँ वो देखा है मैंने, आप हमेशा कमेंट करते हो आर्टेमस भाई। ये राहुल नहीं करता साला। है ना डीमंस ऑफ लस्ट पढ़ी है, अगर फेवरेट सीक्रेट क्लास है तो मैंने शायद वो नहीं पढ़ी है डीमंस ऑफ लस्ट। मैंने सबसे पहली मतलब वैसे रीडू ऑफ हीलर देखा था, उसके बाद से चीज़ें मैंने पढ़ने स्टार्ट किया एक्चुअली। पहले तक तो हेंता ही देखते थे, ठीक है। उसके जब रीडू ऑफ हीलर देखी उसके बाद से मैंने भयंकर पता नहीं जब फिर उसके बाद मैंने मांगा पढ़नी जो स्टार्ट की, उसके बाद से मैंने कहा ये भी पढ़ के देखते हैं इसमें क्या सीन है। उसके बाद जब पढ़ा ना पहली बार,
मैंने कहा यू नो हु। बेटे स्टोरी कर जरा, यू नो हु याद आ जाएगा तेरे को कौन है यू नो। ठीक है, हल्के में ले रहा है यू नो को। यू नो भाई, he deserve everything भाई, मजाक करके स्टोरी। he deserve everything, everything। कल चायरो गाइड बना। ओ नो भाई तो हार गया ना कल चारों में। ओ माय बैड यार, मैं बहुत यार मेरे को कुछ हो गया चैट में। मेरी आदत का मेरी याददाश्त कमजोर हो गई है। मैं भूल चुका हूँ सब कुछ, मैं भूलने लगा हूँ एक्चुअली। अभी आर्टेमस ने कमेंट किया था सेटिंग में जाके, अरे नहीं आ रहा है वहाँ पे यार। लेट मी चेक, दोबारा से कर लेता हूँ सेटिंग्स में जाके। किस में, चैनल की सेटिंग्स में या फिर वीडियो की सेटिंग्स, मतलब वीडियो के उसमें। भाई सीक्रेट कास्ट पढ़ के क्या फील हुआ? ठीक था। फील क्या होता है, फील नहीं करते हम ज़्यादा, बकचोदी नहीं करते हम। नहीं मतलब ऑटो डब वैसे एक तरह से सही भी है देखा जाए तो, क्योंकि वो ऑटो डब वही बोल रहा था जो मैं बोलना चाह रहा था, है ना। ठीक है, और अगर कोई बाहर का बंदा सुनता है वो तो भी बढ़िया ही है, नॉट अ बैड फीचर। बट अपने बंदों के लिए जो हिंदी सुनते हैं उनके लिए नहीं है ना। फेवरेट चैप्टर यार बहुत पहले पढ़ी थी, अब तो याद भी नहीं है। उसके बाद तो पता नहीं क्या क्या पढ़ दी थी मैंने। उसके बाद शायद मैंने पढ़ी थी तुम्हारी स्टेप मदर्स फ्रेंड, और भी पढ़ी थी यार, नाम याद नहीं रहता एक बार पढ़ के। स्टेप मदर्स फ्रेंड भी अच्छी थी। सीन तो सीन ही होते हैं। ये क्या है? डिफीट द मॉन्स्टर बिफोर यू। ये तो हलवे हैं, हलवे। भाई ये क्या हो रहा है? मतलब कि कल चायरो गाइड बना, कल चायरो बिल्ड करेगा तू, बनाऊंगा तो। Why isn't it giving off light anymore? Is it broke? जिंदगी का था इंतजार, वो घड़ी आ गई। डाम, ये तो बड़ा। ओ ये क्या है चैट? Is someone there? Please help me. Isn't that Flintz's voice? Did you hear that? Right. भाई चीज जो कितने यूज हुए थे। अबे यार कैन वी skip to the good part? Yeah. Adventure time. Flens, अभी हमको फ्लिंस को बचाना है चैट। We'll be in trouble if these spooky shadows touch us. Quick, use the lantern. Oh, lantern थोड़ी। ये क्या है? ओह, ICICI बैंक। मेरी हेल्थ फुल हो गई चैट। अरे पीछे से मार दिया मेरे भाई, तुस्सी तोड़ दी भाई। ये फ्लिंस के वो है, देख रहे हो जाए भाई, तुस्सी तोड़ दे, तुस्सी। मेरी तुस्सी तोड़ दी। गॉड डैम, यहाँ कुछ ज्यादा ही नहीं है। ओह माय गॉड, मैं तो बहुत सारे पीछे से भी आ सकता है। मैंने तुस्सी मार दी, एक और आ गया। नहीं आ रहा ना।
मेरे आगे भयंकर मेरी हेडलाइट है चैट, जैसे मोटरसाइकिल के आगे नहीं होती ऐसे बार बार ऐसे करने में जल जाती है। बचा लो, बचाओ बचाओ फ्लेंस को बस। करेंटली सीक्रेट क्लास ऑनगोइंग चल रही है, इफ यू वांट टू नो। ओके यार एक टाइम ओके कटसीन चैट फ्लेंस बाबे। ओह इसकी लाइट कैप्चर कर ली लग रहा है। Hey, ये कौन है? You again. यही था क्या पहले वाला? कटसीन एंड हो जाएगा। It's stronger than before. Lantern now. यही है क्या वो सिनर? आई डोंट थिंक सो। ओह बादी मार दी भाई ने, लेकिन ओह वी कैन प्योरीफाई ना। हाँ डैम, चल फ्लेंस दिखा दे अपना कमाल। It escaped again. भाग गया। This situation speaks for itself, I presume. Damn. ड्रिपिंग वेट पढ़ो। हेलो प्लीज भाई, हेलो शुभम भाई, क्या हाल है? वेलकम टू द स्ट्रीम। मैं भी क्या उम्मीद कर रहा हूँ ना, पहले आप में ही मतलब पहली स्टोरी में ही कि इसको हरा देंगे। क्या फायदा उतना करने का जब भाग ही गया। मेरे को लगता है अब तक का सबसे लंबा कट सीन होगा गेंशिन का। अब तो आदत हो गई है ना उधरिंग वेव्स की, इतनी कट सीन लंबे लंबे देखने की हर बात पे। साला इस पे वेट करते रह जाता हूँ, कब कट सीन आएगा, कब कट सीन आएगा, कब कट सीन आएगा। सही में थैंक्स फॉर द मेंबरशिप नूरी भाई। यार कुशल भाई ग्रेट है भाई। कुशल भाई चले गए, पता नहीं कहाँ चले गए। और सोहम भाई क्या हाल है, क्या चल रहा है? अपना रोवर होता तो उसके एक बार में, लेकिन वो रेनी इसकी तरह ही लग रहा था, फ्लेंस के टाइप का ही कोई ना, ह्यूमन टाइप शील्ड। अभी हमको बताएगा मैंने नहीं मारा उसको, राइट? Sorry you had to see me like this. All the same, you have my sincere thanks to think you had the power to so easily cleanse the filth staining the lantern, which tormented me so. Might I ask what magic that was? Or whose people you are? जादू था, बस एक्सप्लोर कर रहा रीजन। भाई साहब मेरे को लौमा चाहिए, रीजन तो मैं कर नहीं रहा। अभी और 2 कटसीन्स बाकी हैं, तो भाई कब आएंगे? वही सोच रहा हूँ। He is the sinner who is like dinner for my team. ओ आगे फाइट होगी क्या चैट इससे? होगी ना शायद से। I don't understand it either. Just my constitution I think. And an enviable constitution. और ये क्या बकचोदी थी, मतलब कि ट्रैवलर स्पेसशिप में अकेला था, लुमीन बाहर की थी, इसीलिए शायद उसका रिकॉर्ड था ना हरमन सोल में। ये खाली भाई चूतिया बना रही है हमको, बता रहा हूँ। क्या नाम है अपनी बहन, इसकी बहन, मैं बता रहा हूँ चैट, है ना? खाली उल्लू बना रही है हमको। That is a long story. Many moons ago. Many moons ago, when on wild hunt clearance duty. वैसे कितनी स्टोरी बची है चैट मेरी, ये बताओ जरा मेरे को। अभी तो प्रीमोस से ज्यादा मतलब है, टू बी ऑनेस्ट। I sensed a power surging within it that was at once familiar, yet I freely confess to being an avid collector of ancient gems, coins, and other curios. साला HSR में इतनी स्टोरी आगे चली गई है ना कि मैं सोचता था अब करूंगा, अब इतनी आगे चली गई कि मेरा करने का ही मन नहीं हो रहा है, टू बी ऑनेस्ट। बाय द वे गेंशिन होंगे थर्ड से शायद से कनेक्ट हुए हैं कॉज ऑफ स्पेसशिप, हो सकता है। अबे
ये भी तो आई है ना, क्या नाम है इसका, फिशल भी तो आई है, होंकाई इम्पैक्ट से तो आई है वो, स्पेसशिप से तो आई थी वो भी शायद से, फिशल भी। अरे अभी तो इसका सिबलिंग भी आएगा, ये ट्रैवलर का ऑल्सो क्वेस्ट का ख़त्म होने के बाद एक्ट 2 के बाद एंड में कट सीन में वार का वर्सेस स्पॉइल कर दिया फीनिक्स भाई, मैं स्टोरी कर रहा हूँ। Afterwards, I wound up collecting a few more such crystals quite by accident, and discovered that मुझे they could merge into a भाई single मैंने क्यों piece without my पढ़ा? prompting. Though my understanding ends there. ओह सॉरी, कोई बात नहीं, नेवर माइंड, टाइम आउट। मैं इतना लेट पढ़ता हूँ ऑन टाइम चैट, और अभी स्पॉइलर वाली चैट इतनी जल्दी पढ़ी ना मैंने। कोई बात है चलो। वार का साड़ा, I wound up collecting a few crystals. Okay. It was only recently that they began slowly emitting abyssal energy, which could neither be dispelled nor weakened. Is that what Rarer claimed belonged to him? That must be what he's after then. I concur. And here's the kicker. Before he was exceedingly weak. In fact, I've already beaten him several times. Oh. Though I could not destroy him completely. Yeah? But I noticed while engaging him that the crystal fragment would restrict my powers. As such, it occurred to me that I should hide it rather than tangle with him any longer. Alas, he has proved most fixated upon this fragment. And for some reason, his strength has grown by leaps and bounds since I last encountered him. And where, might I ask, would it be safe? Were our places switched? Yes भाई, yes. वारका का शक्ल नहीं दिखाया पूरे आर्कॉन क्वेस्ट में। अबे सारे ट्रेलर में तो दिखा दिया। अरे बस वारका नहीं देख पाओगे आप भी, cause केवल अबे वारका देख तो लिया, दिखाया नहीं होता ट्रेलर में तो अलग बात थी। साला सब कुछ तो रिवील कर दिया, एलिस भी दिखाई दी थी उन लोगों ने, सब कुछ दिखा दिया था उन लोगों ने बेसिकली। Yeah, throwing it away would mean giving the bad guy what he wants. But exposing yourself to its corrosion and growing weaker by the day. Only those who shoulder risks are qualified to welcome in the turning of the tide. Though I shan't deny that I have your fortuitous arrival and most outstanding assistance to thank for my either way. It seems this fragment is now utterly still. That must have made it useless to Rerir. I doubt he would have retreated so readily otherwise. I imagine this wasn't the only reason you came looking for me, though. क्वेस्ट के कटसीन में ब्लैक स्क्रीन है। Also, I see. रील भाई, मेरे को एक्सपीरियंस करने दो, राइट? अगर कुछ बताते हो तो ऐसे बताया करो कि मैं स्पॉइल ना हूँ, राइट? कि कौन क्या करने वाला है मत बताओ, कि लाइक एक एक्साइटमेंट बिल्ड करने वाली चीजें बोलो बस, दैट्स इट, समझे? नॉर्थ ग्राइम में बारिश रिवर्स जाती है इनटू क्लाउड्स हैं। कैन यू थिंक ऑफ एनी रीजन व्हाई रेन? मैंने रील देखी। To use the light keepers to find me, I suspect. I did not inform anyone of my. ये जो बारिश हो रही है ऊपर से जा रही होगी। He should have had more difficulty tracking me. अबे साले क्या पता रिवर्स करी हो उसने वीडियो। जॉगिंग to use the light keepers। बीच में जो पार्टिकल आ रहे हैं ऊपर को तो जा रहे हैं साले। जैसे मैं पढ़ने वाला होता हूँ ना वैसे आते हैं पार्टिकल। भाई अगर देख कुछ स्पॉइलर है तो राहुल उड़ा दिया अगर स्पॉइलर वाले मैसेज।
whereabouts. बस अगर वो तूने क्योंकि तूने स्टोरी कर ली है ना, अगर तूने नहीं करी, अगर तूने कर लिए तो उड़ा दियो और उसे सही से बताया होगा. They alone have the ability to quickly pinpoint my position. Our Sergeant Major has a Kuvaki-powered device that can be used to detect others who bear a lantern. They usually don't pay my whereabouts much mind unless they absolutely You mean this thing? Yes. Where did you pick this up? We found it inside a lantern when we first charged into the Wild Hunt anomaly. It must belong to a Ratnik dispatched to investigate In the the area, amount. who अरे विनिंग भाई स्पॉइलर मत दो यार, वो स्टोरी का एक्सपीरियंस रुइन हो जाता है पूरा. Well, at least they're not dead. Let me enjoy my story too ना, जैसा आपने करी फर्स्ट टाइम में. Guess it's not surprising how they found you so fast then. But if Ruru could have shapeshifted into Sosi, why didn't he just use that Kuvaki device to find you? वो तो मॉड है, उसका तो काम है. Man, would I love giving spoilers, but alright, do it. I just don't miss the cuts. You love giving spoiler, but rules are rules, भाई. वो तो अपना काम करेगा ही. Were he to use it, that device would likely fail to act as it should. Oh. So not only is this Rerir ruthless, but a purveyor of... You might not be familiar with Sergeant Major Sosi, but he put his heart and soul in... Our deployments are subject to orders from headquarters, and his orders were to be stationed long-term in Nasha Town. He worked so hard. I love giving time out. Excellent results that might convince them to transfer him out. Mod is a mod. Oh. But every year they would say, wait a little longer. Wait a little longer. He often wondered. In truth, everyone had nothing but the highest praise for him. The higher-ups would think, he's doing great where he is. Let him stay there forever. A most convenient choice for them, at least. I love roasting and cooking other. Whereas his subordinates would think, wouldn't it be a shame if we were to lose such a talented, easygoing boss? So he waited. And he waited. Until the world closed its eyes in the depths of the night, and a lantern was slowly lit for him alone. One that has played out many times throughout history. Another reason to take this Rerir's head. Oh. At least we now know that he's looking for these fragments inside Wild Hunt Anomaly. And yet, what did the Sergeant Major have to do with any of this? Could Rarer be angry that the cannon Sosi set up to fire destroyed the fragments he wanted to collect? Could you take me to the scene of the crime? But you are a suspect in this case. We shall just have to exercise some discretion then. Okay. There you go. Light it up! Everybody stand back! Let's... Get to work! Laline, East Papa, Pyroclastic Surge! The rewards of an invention worth remembering. And बेकार कैरेक्टर. कहाँ जाने का मेरे को अब? ये बार-बार नासा टाउन से इधर उधर से इधर ही करवा रहे हैं यार. Also I forgot to ask which standard 5-star you chose in anniversary. मैंने तो वो ले ली मिजुकी, क्योंकि I didn't have मिजुकी तो मैंने मिजुकी ले ली.
एक कैरेक्टर का कलेक्शन तो चाहिए, राइट? आई नो बिल्ड करनी है यार मेरे को, आई नो पसंद आई मेरे को। अच्छा यहाँ से मैं डायरेक्ट नहीं आ सकता क्या? मैं तो डी लुक ले लिया वापस, डी लुक तो मिलते रहेगा। I understand the situation more or less. Either way, I suppose we were lucky not to receive a warm welcome on the way over here. It seems my fellow lightkeepers do not... Yeah. Guess Nasha Town's already been enough of a mess. Let's stop here. Any further in the Ratniki, since you two can enter, I'll have to request that you kindly pick me up once you're in... Oh? And... You'll know when the time comes. अच्छा दिन कॉन्स्टलेशन किसके लिए रहे आप? जो फ्री में मिल रहे ऑब्वियसली वीकली करने के बाद। नीलो मेरे लिए दो ही यूजफुल है, नीलो या फिर शेन्ने। शेन्ने अभी ट्रेंड चले जाएगा फिर से, शेन्ने तो वैसे भी बेंच हो जाएगी मेरे को लगता है नया आने तक। एज द क्रायो मे बी हु नोस, वैसे भी क्रायो इतना ट्रेंड पे रहता नहीं है गेंशिन के। तो नीलो ही होगी, ब्लूम। नीलो मेरे को वैसे भी काफी पसंद है। मैं मोना की ले रहा हूँ, क्यों भाई? और कुछ नहीं होगा ना शायद सब क्या? Well, you're just... If there's anything else you'd like to look into... Sadly, no. The motive behind the killing remains a mystery. And while we somehow managed to get news of Flint's, but considering that Nefer from the Curatorium of Secrets came forward to help investigate, I have no doubt that a breakthrough's not far. Because I'm a newbie, so you only got 2 D-Look and Mona. We'll do our part too. All right, we're going in. Get a DPS, bhai. Good DPS actually. Phew, we're in. Thanks to Nefer's reputation, but we still know nothing about how Flint's is gonna enter, or how we'll pick him up. Something the matter? Huh. That looks like Flint's lantern, but where is he exactly? Well, we've got the lantern. What now? Flint's company. Oh, Paimon almost screamed out loud. You never said you could do magic like that. This lantern may have a rather peculiar shape, but so long as it doesn't glow, it won't stand out in the dark. I calculated that you would have already entered, so I chose a spot visible from the window before using light to send you a signal. As I thought, you're both sharp-eyed and on the ball. But I know Newbie Mizuki is actually a better choice early year के लिए। अच्छा Mizuki पता नहीं क्या करती है मुझे, but I always wanted D-Look in my early AR. Rahul bro, I'm at mid game right now at Fontaine. Fontaine? अभी से AR 48 है वो राहुल अभी। The perks of being veteran adventurers, huh? Your composure is more impressive still. You're right. But let us leave such trivial topics for a more relaxed moment. Just as I thought. Identical powers must flow from the same source. It was the Wild Hunt, then, that took my form and killed the Sergeant Major. But what? To sow chaos by depriving the Lightkeepers of one of their... If the Wild Hunt's true form is powerful enough to यार stand किसी against कैरेक्टर the को मारो ना, world as मैं you claim, NPC को क्या मार रहे हो? I fear not even the full Finally force of uninstall Lightkeepers सेल could सॉन्ग, stand कल से against मेरी भी him. जर्नी स्टार्ट हो Let जाएगी। alone the hand, he would have no reason whatsoever to pick quarrels with individuals. Let's look again more closely.
we must leave no stone unturned. Well, that makes things simpler. In that case, allow me to disturb the fallen. May the ghost flame guide Yo, your Tanveer bhai, spirit. my first 5-star is Mona on May he Movika rest banner in lows, peace. then Innova guaranteed win and Diluc is university. Oh, I didn't know. और क्या चल रहा है? कुशल भाई, what's up? Welcome to the stream. Thank you so much यार कुशल भाई for 10 gifted membership भाई साहब. मैं खाना खाने गया था उस टाइम पे, घर वालों ने जबरदस्ती बुलाया तो मैं खा के आ गया. Thank you यार. Love you कुशल भाई for the 10 gifted यार, means a lot. पीक गेम थी भाई, मजा आया खत्म करके. कल से एक सेल सॉन्ग खेलूंगा खत्म होने तक. ये स्टोरी खत्म कर दूंगा आज. देखता हूँ रात को शायद यूनो गाइड अगर बताऊंगा तो काम कर लूंगा उस पर, थोड़ा थोड़ा वर्क करके फिर उसका देखता हूँ जो भी है. फिर हो गया सेल सॉन्ग कंप्लीट. कल से फिर रेगुलर जब तक सेल सॉन्ग खत्म नहीं होगी तब तक वो ट्राई करूंगा, क्योंकि फिर नया बैनर भी तो आ जाएगा ना उदरिंग वेव्स का. When we fought, he स्ट्रीम seemed वगैरह like भी. quite a reckless foe. Certainly not the meticulous mastermind type. Oh, if we can't get any leads, we might have थैंक to यू go back कुशल and भाई find फॉर द Pepper. 10 गिफ्टेड यार, मींस अ लॉट भाई. क्या भैया जी, मैं अब जा रहा मेरी क्वेस्ट करने. ओके सिया. Oh, the longer we're stuck here, the likelier he is to achieve his goal. हुआ कि 69 है. तू कहाँ पर है ब्लेजू? एक्ट 2 की सिल सॉन्ग. मैं एक्ट 2 पे हूँ अभी. मुझे सैंड्स ऑफ कराक एक्सप्लोर करना है. मतलब बेसिकली मैंने साइड क्वेस्ट कर दी थी, ठीक है. मैंने सारे मर्चेंट अभी मेरे को, मैंने तीनों कॉग हार्ट नहीं यार, तीनों मतलब जो भी है. अब मुझे बेसिकली लेस से लड़ना है आई गेस, है ना. वो जो डोर में एंटर करके लेस से लड़ना है मेरे ख्याल से. लेकिन अभी मेरे साइड बॉस वगैरह है, मेरा बेसिकली एक्सप्लोर करना है मुझे एक्ट 2 में. अगर मुझे जाना होगा तो वहाँ पे जहाँ पे वो रोबोट्स, 2 रोबोट्स होते हैं जो ऐसे ऐसे फाइट करते रहते हैं, वो इधर उधर डायरेक्शन में जाते हैं. वहाँ फाइट करने का जो डोर आता है उसमें जाना है मेरे को डायरेक्ट शायद. हम उफ कितनी प्यार से बोला. तो आई गेस वहाँ है. तो उससे पहले मेरे को सैंग्स ऑफ कराक जाना है और ब्लू आई गेस वहाँ जाना है. क्या नाम था उसका, या जो भी है बाकी के एरिया जो एक्सप्लोर करने बचे हैं वो करना है मुझे कुशल भाई. अब Is that all? Have we really tried every angle found? I will look at the flashing light on his arm. You mean this? I'm not well versed in machinery, but that means his mechanical arm is malfunctioning, right? No, that's not right. Paimon remembers this signal. We saw it before while repairing the can. It doesn't mean that the components are damaged. It just means that they're due for regular maintenance. So the device has stopped operating. But the real problem is that... Yeah, he even helped us find the maintenance port. बुआ ने आपका क्या बिगाड़ा मॉड पाजी? Yeah, he even helped us. It could still be a coincidence, but considering it hasn't been long at all... The Sosi you met could have been Rerir in disguise. In other words... That's right! If only there was some way to prove it. You mean Hintsa? We had a short chat with him once at the tavern, but it's so late. I know where he lives. The situation is critical, so let us now take up the role of uninvited guests ourselves. Ah, yes. Remember to pick me up by the window. चल मैं ज़्यादा गेंशिन डिलीट करते हैं. रीसेट हो गया मेरा. वाह ओके. मून शिफ्ट एसेंडेंट ग्लीन. ये साला स्लम एरिया टाइप का नहीं लग रहा है इधर पे. बाहर निकाल. कोविड अमेरिका सर्वर. हाँ अमेरिका वाला है. And Flint's. Given the hour. It is indeed. We are investigating a certain matter in connection with Sergeant Major Sosi.
We'd like to know if he... So see. Oh. You know what? Forget it. I'm sure it's complicated. No further questions from me. Thank you for your understanding. How long? How low ping on? Got it. Explain क्या भेजा? 8 days ago, he came to request a round of regular maintenance. But as it happened, Oh I'd run out of भाई required components. साहब. Damn, looks crazy भाई. Right? That's why WhatsApp check शूली मैंने अबे मस्त लग रहा भाई. Damn. क्राजी किया रे. अच्छा लग रहा है, काफी बढ़िया लग रहा है. नीचे से ब्राउन सोल. डैम. इतना बुरा भी नहीं चलता, पिंग ठीक ठाक रहता है. यार पिंग इन एशिया सर्वर 300 पिंग आता है भाई शायद से गेंशिन में. ची His mechanical arm is especially sophisticated. री रिलीज वाला है फ्रेंड के मामा. The parts too could only be made कुआं by में. her. ओह डैम. री रिलीज सही है भाई. मस्त डायरेक्ट है कंपनी से. कौन से सोचते पूमा के हैं? 320 लोवेस्ट पिंग रहता है. पिंग लैब हैंग बहुत है भाई. 300 पिंग अच्छे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं. As such, they usually take several days to arrive. In fact, this time, he even asked me if we could push his... And I understood. Completely. Not being able to use your hand, that's rough for anyone. But even more so if your job involves fighting out in the wild. So I did my best to convince Aino to rush the job. प्राइस गेस कर इसका. कितना होगा? साढ़े 3-4 के अराउंड है. 3 से 4 के बीच होगा शायद. या कितना? मैं तो लो ही गेस कर रहा हूँ. आज ट्विच पे भी ट्विचिंग कर रहे हैं. ट्विच पे भी ट्विचिंग कर रहे हैं. 1900. ओ भाई अच्छा नहीं अच्छा लग रहा है. वही तो कह रहा हूँ. लुक वाइज प्रीमियम ही लग रहा है. uh 1900 में आपको मिला या फिर क्या सीन? 1900 का ही है. You listen to Slipknot? No. And eventually, the parts arrived. 3 days ago, if I remember correctly. I sent word to the Lightkeepers immediately, but he never showed up. What's with those... You've provided us with some very crucial information, Hintsa. You have our thanks. We can't make everything public yet, but once our investigation is complete, I will return to thank you and provide an explanation on behalf... No worries. Just glad I could help. Thanks. Good night. Good night. मुझे मिला प्राइस will be around 6K. वही ना. It seems Damn. that it is as we guessed. The Sergeant Major Sosi you encountered while repairing the cannon was actually Rereer in disguise. 8 days ago, he had yet to act. But at some point after that, he attacked and imprisoned the Sergeant Major. With the immense gap in strength between them, the job was finished in a single blow. And thus Rereer had no opportunity to discover the malfunctioning. Perhaps his mastery of shapeshifting extends only to outward form, and not therefore to complex internal mechanisms. Hence his oversight of the uniquely mechanical traits of the Sergeant Major's arm, and in turn, this flaw in his वो मैं disguise. आर्टिफैक्ट फार्म भी RNG ही है. हाँ RNG ही है, बट बेटर लगता है मुझे. पता नहीं गेंशिन से क्यों. He thought no one would realize his mechanical arm is आर्टिफैक्ट actually फार्म made तो of some kind of आर्टिफैक्ट वो muck तो on the inside.
so long as it worked. आरएनजी हर किसी में ही रहेगा जितने गाचा गेम्स आएंगे। वैसे सही प्राइस में मिल गया क्रिस हैं 1900। Still seems like there's a lot of guesswork involved here, but it mostly makes sense. अबे क्या बोलते क्रिक्स भाई, आपने देखा वो कि सिल सॉन्ग में स्टील सोल मोड भी आ रखा है जिसमें तुम्हें 1 गो में करना होता है शायद से वो। This also has me stumped for the moment. The cannon has always been used, but how would that help Rerir? Assuming he plans to collect the fragments within Wild Hunt anomalies, firing the cannon works against him, since it would blast those fragments to smithereens. नहीं करना। So we solved one mystery, only to dig up another. Whew. This is getting Paimon kind of down. Yes, I'd say it is high time we took a break. ये नया एको फार्म करने पे अपग्रेड करने के मटेरियल ही नहीं मिल रहे, पूरे खत्म हो गया, पूरे खत्म हो गए तो भाई। Yeah, we should totally get some sleep first. A reasonable suggestion. I have no doubt that my quarters have been turned inside out by now. My colleagues have never failed to live up to my expectations of their discourtesy. That would be good, yes. Feel free to put the room costs on my... वो तो एक्ट 2 खत्म करने के बाद ही खुल जाता। ओह मस्त सर्दी आने वाली है अब 1 महीना और भयंकर गांड फाड़ होगी भाई, सर्दी भी देखना। Phew, back inside. Oh, we can finally. I suppose we could all take a moment to unwind. As I recall, had you already sensed the unique power within my lantern at that time? I see. Words truly do fail to capture you. Fortunate then that abyssal energy was only leaking from the fragment in minuscule amounts when we first met. Or I might have been... Yeah, hard to say how that would have played out. We've had a whole bunch of unpleasant run-ins with the Abyss. You mean to ask why I'm going this far to oppose him? Well, as a light keeper, I'd say... Yeah! You're covered in more mysteries than Paimon could shake a skewer at. You can't just get out of explaining yourself by making... रजाई में सोऊंगा पूरे दिन हम ले। All right. I suppose I do owe you some honesty, whether out of gratitude or the need to build trust. Your deductions have been quite correct. Should one wish to conceal oneself within a lantern, कैसी गेम लगी क्रिक्स भाई? alone is not enough. अब वो करोगे ना, लोअर देखोगे ना इसका। You know humans well. And naturally you... But some things that humans would consider difficult are quite So, you mean you're one of the latter? Have you heard of how Snezhnaya was once the realm of the Fae? This race is no longer of any importance. But they still exist. As evidenced by the fact... We've heard some scattered legends, but that's all... I once turned my heart toward humanity. And thus did I experience loss. I once labored and did much, and put an end to my tale with my own hands. When you realize you are floating in the middle of a vast ocean, you cannot help but feel that swimming in any direction would be... Would it not be better then to simply sink? But before I could sink to truly lightless depths, chance had it that I should be awakened by a band of Ratniki. Cricket 24 जिंदाबाद. Game was fun. अब क्या खेलूं? They were facing a horde of abyssal monsters, and could not last against such a disparity अब in इसी strength. genre पे खेल लो क्रिक्स भाई. Yet none fled. क्या नाम था? 9 souls. 9 souls. Those who dwell in darkness for long enough become exceedingly sensitive to all light. And the first light I saw अब wait करो, अब किसी नए game was का और that क्या? which shone. Perhaps I was moved by their valor.
Perhaps I simply saw my past self in them and was moved to, but I was freshly awoken and my powers were lit. The survivors and I buried the fallen heroes. That was the origin of the Final Night Cemetery. Well, not exactly. I was just more familiar with them. So joining up seemed the most convenient way to experience. इस एक बंद नहीं हुआ क्या पता नहीं यार हो तो जाना चाहिए ना भाई यूरो ट्रक सिमुलेटर खेलता थोड़े दिन तो चिल ना Well, I believe it. मैं भी वो वाटर पार्क खेलूंगा जो जाहिर लोग खेल रहे I'm थे well past the age when one might believe nonetheless. There are still some things I will not allow to happen. Tomorrow I shall go and check our records to see if I can find any connection between the Wild Hunt, Rear, and... Will you need us to get you where you need to be? once I complete Sill's song. Oh, I'll be fine. I keep a backup card. Can you even go back there right now? Won't there be Rat Nikki watching it? Thanks for the reminder. I believe they'll have checked my place, but they won't have stayed. All things are ranked according to their priority, and we lack them. And even if someone is waiting, I have ways of... All right then, we'll trust you. We sure ended... Anyway, I hope you'll help me keep this a secret. I'd prefer others not to know about my past unless strictly necessary. Nor do I want to attract more trouble on account... Paimon's lips are sealed too. All right. भाई कितना बचा है ये? Let's go get some sleep. There's tons to do tomorrow. How much? How much left, भाई? So much noise. What's going on this time? अभी भी बचा ही है 1.5-2 घंटे का लग रहा है मेरे को फील आ रहा है 1.5 घंटे का या 1 घंटे का 1-1.5 घंटे का Hey! Where's Flint's? Is he here? We would be most obliged if you would pipe down a little, dear guest. Resting? We're all about to be done for, and you're Flint's is a Wild Hunt shapeshifter, here to deceive us all! If we don't get rid of him now... You'd better give him up. If anything happens, your business here... Or are you in cahoots with him? You with the Wild Hunt? What happened? We were so careful last night. How did anyone see us? What do you mean? They clearly know something. What else would they be talking about? This is so confusing. What do? These people are no match for Flint's, but they're super heated, right? It's not like all the unusual stuff about him will make... Okay. Hey! My apologies. Hold on. What into that is the meaning of this racket? Are you in... Boss, do we really have to entertain people who don't respect the rules? Call a few of your boys and have... And what hole did you crawl out? A watering hole, of course. The one you've just disturbed. A place to get a moment's respite from all the recent unhappiness, and to escape from all this talk of the wild. Who'd have guessed people like you would come bursting in, shrieking louder than an... This is a matter of utmost importance. We've got solid evidence. All we... Exactly. And you sure don't look like an impartial party. Oh, don't I now? How about this then, boss? Let them do their search. If they find their man, but if they don't, then they owe everyone here an apology, as well as compensation for all the racket they've caused. Wait, it's... All right. I suppose that's the only way. If we don't let them in now, they'll be back sooner or later. Oh, all right then. Well, I'd say that sounds like an impartial... Come on!
No sign of Flint's. But how can that be? Done searching, are we? Guess it's time to uphold your end of the bargain, huh? Oh my god, इसने मारा उसे. So, Paimon, you've been waiting to ask? Yeah, My inside man with the Lightkeepers informed me that you paid the crime scene a late-night visit. I surmise that you must have rendezvoused with Flint. Then, early this morning, a group of people gathered at the town gates, news spreading amongst them that the Wild Hunt could disguise itself by taking on. Everyone started throwing out the names of possible suspects. And amidst it all, Flint's name started gaining more and more traction. I'm sure his solitary lifestyle may have played a part, but I wouldn't discount Rerir throwing fuel on the fire. So, did Flint's make his escape after hearing about And that's where I, Yehoda, while everyone was super focused. I got her to climb up to a window to help Flint's out, only for her to return with nothing but a lantern. Aw, come on, pause. I was just getting. We initially intended to bring Flint's back to the curatorium and wait those people out, but I never expected this to be all that was left. I imagine, though, that he wouldn't have left something that was so seemingly important to him behind. Might he intend to come back and get it later? Maybe? Well, he's out of harm's way now, so... Oh? What Paimon means to say... All right, then. Yehoda, contact the others. Let's have this discussion over at my place. यहाँ से तो मशीन को फायर किया था इसने. यहाँ से मशीन से गोली चलाते हैं शायद ये लोग. देना चाहिए यार ये ऑप्शन भी, पता है, मशीन में गोली चलाने वाला. डिस्ट्रॉय करेंगे भी तो क्या क्या बुरा है, अपने ही वर्ल्ड तो कर रहे हैं. I see. So Flint's has a fragment taken from within a Wild Hunt anomaly. Sorry. Oh, आ गए सब. Is he gonna be okay now that he's on his own again? Earlier, he said that the fragment had gone still, so it's probably of no use to Rerir. In that case, Rerir shouldn't have any reason to keep pursuing him, right? So, was all that ruckus back at the flagship? If I were him, I would have simply turned my attention to collecting other fragments. A reasonable course of action. Remember what we heard back at the tavern? The actual number of Wild Hunt anomalies destroyed has been greater than Lightkeeper records. Some of these must have been Rerir's doing. He must have been seeking more. This much is pretty easy to understand, but why would he pretend to be Soci and put so much effort into getting the camp? Maybe because that'd be more efficient than having to clear anomalies himself. Yeah, I'm confident that the ammo we're packing has the oomph to do that. But I am a mechanic after all. For me, test data and their conclusions speak loudest. Oh, why don't we find a few of those fragments ourselves and use Kuvaki to carry out a little experiment? Our lab could certainly accommodate such a test. In other words, we gotta destroy a couple of anomalies and collect fragments from them. Lightkeeper operations have just about ceased following the Sergeant Meanwhile, the Wild Hunt continues to grow in scale by the day. I fear only we... Then we best act fast. A feeling we all share.
There are 3 wild hunt sites that must be dealt with urgently. But I believe we have the capacity to handle it. Works for me. Ineffa and I will take our workshop assistants to deal with one of the sites. The curatorium will handle another. And we Frostmoon Scions shall deal with the remaining one. Paimon didn't think she'd ever get to see everyone here carrying out a plan together like... Never mind you. This is a first for me, too. Let's head out then. We'll meet back up at my lab with the fragments. Understood. Time is of the essence now. Our foe could make his next... Gotcha! Stick... Gotcha! Huh. Anyone seen the lantern? Has Flint's dropped by already? Well, considering what you said earlier, you know where we're going next, right? Next, हम कहाँ जाएंगे वही, I guess. I knew it. अच्छा यहाँ जा रहे हैं क्या हम? Sorry. उधर कुछ तो तोड़ने वाला है जाए. Rev the engines. Try and stop me. ये क्या है भू? वॉटर सीन ये तो ट्रेलर में भी था शायद ये वाला लेंस के यही जगह थी. No one's guarding this place, just like... This way. Let's move. We're running out of time. We are running out of time. Ah! There you are! Okay. Or not! How are we supposed to read through this? Difficult, yes. But it is also to expose the true intentions of this Rarir. Hope we don't No land on cry our history. heads then. Ghost! That file suddenly moved by itself. This is a graveyard, right, Flint's? Many strange things happen here, but this is not one of them. But that file really did... Hey, come out! Wild hunt phenomena? What the heck? Another file's moving! Are we being given hints? I feel no hostility. Really? Hey, seriously, another one? ओह कौन कर रहा है इनकी हेल्प लेगी ना. Phew! Finally finished. The material I've read through has all been about past wild hunt incidents of enormous scale. What about you? Paimon as well. Guess that makes 3 of them. Whatever this is, it seems to want us to notice something. Let's bring our All right. All these incidents look pretty different. Wait. I've noticed something. Before the occurrence of these huge wild hunt events, a smaller scale one would erupt in the exact same location. And look. All these smaller scale wild hunt site reports... They'd be detected, but would go inactive before any forces could be sent to deal with them. They could then be sealed directly using a tide seal stone. Huh? But why?
some of these records are too old. I doubt he had regained the ability to act freely yet, or we would have met long ago. Ah! And here's another similarity. Kuvaki and nearby soil completely drained. Could this be Kuvaki and the Wild Hunt are mutually opposed. We Lightkeepers previously believed that these small Wild Hunt sites would temporarily go inactive due to being neutralized, but now that we've synthesized all this data, there is a key issue this hypothesis cannot explain. Indeed. Despite the name, I would not call a tide seal stone's sealing powers watertight exactly. But for it to fail and the situation to deteriorate... Paimon feels like she's almost good. Yes, that might be it. It could be that when Kuvaki and Abyssal energies meet, the stronger side will suppress the weaker one. And while Kuvaki can indeed destroy small-scale Wild Hunt anomalies, should Rerir be strong enough, the Kuvaki might be his for the taking instead. Paimon kinda gets where we're going with this. What are you referring? We had a real close encounter with the Abyss in Netland. It's a force that tries to taint everything. It's hard to explain in detail, but basically, your reasoning makes sense. Was there a gap between him pretending to be Sergeant Major Sosi and the... There was. Aino needed to make some adjustments after we finished those repairs. Rerir, disguised as Sosi, left at that point, leaving him more than enough time to shapeshift into you, return to the Lightkeeper's office and set up the crime scene, before heading over to the cannon's target area and absorbing the Kuvaki. It all makes sense. And all that just for the fragment I had with me. It begs the question, what makes it so special that he needs it? That's odd. We shouldn't have any guests. I'll go take a look. Huh? Oh, Lauma ने भेजा कैसे? It's... It's carrying a letter! Oh, Lauma must have sent it. She can speak to the... Situation urgent. The cannon began operating shortly after we left Nasha Town, and it is locked on to Star Sand Shoal. Please return to Nasha Town and assist with all haste. That's gotta be Rerir's doing. But why is he using the cannon again? Didn't he already fire? No time for speculation. He's already made his preparations. If this bombardment continues to increase his strength, he might regain his complete form. What should we do? There's no way we're getting back to Nasha Town in time. Acha, it's not prime. Let's go to the cannon's target site. That's where we should find Rerir. And that's where we'll stop him. One moment. Just let me get this news to Lauma. Nasha Town is in their hands. हम डायरेक्ट चले जाएंगे शायद से, है ना? कट सीन ही आ जाएगा. As expected. Humans, you never change. Always trying to use powers you neither comprehend nor control. But it is also thanks to you that I found a way to return. You've messed with the cannon again, huh? Sorry, but this round's not gonna go your way. Such faith in your companions. But will the inhabitants of Nasha Town understand why they wish to stop the cannon? I think not. When all they see is the Wild Hunt surging up everywhere they look, the cannon must seem like their only lifeline. This
is the truth I have revealed to them. They did this all of their own volition. The zealous worship of power leads only to annihilation of equally zealous proportions. True power does not heed the commands of the weak. You were waiting for us to leave Nashatown. Of course. I imagine the one you call Aino would have managed to stop the cannon otherwise. Shame, then, that you proved one step too slow in their folly. The townspeople will bar the path of all who seek to stop the cannon. And your kind-hearted, weak companions have not the stomach to deal with them. The cannon will not be stopped. Well, sir, you look most pleased with yourself. In that case, before you put us out of our misery, I would like to ask you a question, if I may. See this fragment? It once haunted your dreams, but now it seems useless to you. What is it exactly? That is my corpse. Oh. He's dead and he's back. How? Sorry, what? My body was once torn into countless pieces and hurled into the swirling chaos of time itself. But even so, my life and will were not extinguished. Every last fragment calls to me. Sooner or later, they shall welcome my return. What are you even saying? Huh. So the terror of the Wild Hunt was in fact caused by scattered pieces of your corpse. I guess they don't call you one of the 5 sinners for nothing. Okay. अगर मतलब Serendipity guided the fragments to construct an incomplete version of myself, upon which I began collecting more within Wild Hunt sites across the land. But each time, the fragments I obtained were hardly worth mentioning, while that which you hold in your hand was my Oh. So that's why it responded so strongly to you. Only by retrieving this most critical piece could I gain mastery over the turbulent Kuvaki energies and be fully reborn. Okay. Hence, you fired that first shot, hoping to regain enough power to seize the fragment from me. Are you completely crazy? Weren't you afraid of dying? Dying? Such power has no hope of killing me. It may destroy my form over and over, yet always I rebuild it. It may smash my flesh and crush my bones thousands of times. What truly infuriates me, however, is how you've destroyed my heart. All that suffering, everything I endured, and all for nothing. I've adapted to the strength and flow of this Kuvaki. The next cannon shot will multiply my strength. It will not be a full restoration, no. But it will be more than enough to destroy any in this world who stand in my way. Okay, हाँ sinners के पास तो power है ना. Still, इतनी. I suspect the Kuvaki will have rendered you down to nutrients for my consumption well before you have the time. Traveler! Behind you! Look at that light!
Dang it! Who fired up the cannon without my say-so? Its defensive barrier has also been activated, likely in anticipation of interference by malicious actors. The air is thick with fear and anxiety. It's spooking the birds and... You're here. Looks like this was all part of Rarir's plan. Not only did he plant seeds of suspicion in people's hearts, Yehoda's gone in to scout out the situation. She'll be back. I'm back! I'm back! Oh, it's bad out there. Rumors flying everywhere you turn. Something about the wild hunt preparing to spawn. But that's not even the worst of it. Lots of folks don't even believe the cannon can prevent this crisis. So they're getting ready to make a run for it. Others are... How could they still be thinking about Mora when such a catastrophe... Unprecedented danger brings unprecedented opportunities in its wake. A chaotic... Even those who flee without reserve put themselves at the mercy of the divine. Is it any... After all, a gamble that might rewrite one's entire life. Even so... Well, seeing as you disapprove of their actions so strongly, Lady Moonchanter, I suggest that you be the one to handle them. Not like that's the only major problem on... Affirmative. We must quell the chaos in Nasha Town as soon as possible. Also, the unexpected activation of the cannon entails a high risk of incorrect operation. This must be stopped in a timely manner. Well, about that... People have been talking about how someone might come to stop the cannon. They've decided they won't let anyone in. What? I made that thing! They can't just take it from me! Let me over there! What are they gonna do? They might. If Rarir has already formulated some... For example, he might have spread a rumor that the Wild Hunt would take your form. Possibility high. If they view the cannon as Nasha Town's only hope, they are likely to conclude that anyone who tries to stop it must be with the... It will face strong resistance, but they're just ordinary people. Brute force must be avoided. If there's no time, let's go into the town. I'll find some way to calm the townspeople. Oh, you're back. Hmm? And you... The Traveler won't make it back in time. So they're heading straight over to... Wait, what? Isn't that the cannon's target? Why would he... Assessing risk level. Maximum. So if we can't prevent the cannon from being fired... Then he's prepared for the worst. ये नहीं यार प्लेन्स भी जा रखा है उधर. And we must ensure that his trust in us is not misplaced. Let's go. Oh भाई Lauma की back. Lauma की back. Most of those we've met so far have been attempting to escape, so looks like they formed groups to protect the cannon. If they believe that we're with the Wild Hunt... Is that Lady Lauma? But are you it's you, Rixa. I believe you recognize this power, having lived on Hisi Island for so long. It is not something that anyone else could imitate. I do, yes. But why are you here? Really, I believe you, but the others... Well, The townspeople have been misled into believing that they needed to activate the cannon. But... I know what you wish to say. Our island and Nasha Town have never had close ties. There should be no reason for me to intervene, but you chose to leave the island. You had the resolve and the courage to... It is unfair, unjust, that you should be dragged into this mess just as that life was about to begin. I seek to redress this injustice, not only for you, but for everyone here who wishes to live their lives. Please, have faith in our long-standing friendship, and that this is... Thank you, my... Then come. I need you to step forward along... All right, I understand. Seems we chose the right person for the job. All right, everyone. Let us meet again. Huh?
You're not coming. We won't be able to calm this storm by our power alone. As such, I'll need to contact some, let's call them friends in hunt. Let's go, Yehoda. Is she talking about Varka? Okay. See you. आई चिकनी चमेली Remember these words. हैं The road shall be paved I'll with take use कर दी truth, and we shall pave it ourselves. It's you, Lady Moonchanter. It's her. Everyone, it's her. You're right, my lady. At times like these, we must rely on ourselves. I always think something is off about you. You're actually won't let us capture, aren't you? Time to teach you lessons, Lady Moonchanter. Go. हुक्का नाम है इसका हुक्का Lady Moonchanter, there's a child here! It's all right now. Go, quickly. You wretched monsters! You're not getting anywhere near the cannon! दूर हट The जा monsters you fear do not exist here. The madness you have fallen to has been the source of गुस्सा मत untold दिला गुस्सा disasters. You think we had a choice? Destiny is no excuse for greed and destruction. The choice has always been yours to make, and it remains so, even now. वापस क्यों जा रही है Thank you for bringing us here. We can quickly overcome the barrier by going upward from over. The cannon is all yours now. Got it. Thanks, Lauma. Enough. Give her a crankcracker. Orders received and immediately deferred. Departure takes priority. Please, everyone, listen to me. I will not deny that we hold different beliefs, but in the face of the immense threat that hangs above us all, we must otherwise rifts will surely form, prized open by those. If your fear is born of helplessness, if you flee because you know not how to fight, then follow me. I am no god, but so long as we hold our candles steady and unite beneath the same moonlight, no deception or rumors can be concealed from us. Wow, she's pretty bhai Let us resolve then to defend ourselves and to stand firm against the false illusions by which our foe seeks to beguile. cut scene incoming oh we are in F now damn Go, Enough. This way up. यार मैंने NF चला ही नहीं कभी This is making me dizzier than I लॉल expected. भाई एनो को कैसे ले जा रही है डैम Adjusting route. Make ready. गॉड डैम अनेफा Out of the way, small fry. What happened to the path? Track missing. Fall imminent. Come on, come on, come on. Let's get out of there. Whoa, nice. भाई ये बढ़िया तो लग रहा है एक्चुअली Preparing barrier breakthrough. ओके Brace for impact. फॉर अ रोबोट ओके क्या करेगी ये बैरियर ब्रेक के लिए अबे थोड़ा एक्शन तो दिखाओ ना यार क्या है ये मांगा मांगा चल रही है क्या व्हाट द फक एक
कट सीन बनाना था यार, मांगा पैनल दिखा दिया लिटरली। ओ माय गॉड। Knuckle Duckle, what are you doing here? ओह वाओ, एनो दिख गई मेरे को। चलो इसी बहाने। Installation channel deployed. Ultimatum protocol. Defensive mode engaged. लगता है एमएफआई निकालूंगा मैं भी फ्यूचर में। Accelerate annihilation mode. Interference detected. Entering countermeasure mode. This isn't good enough. We gotta hurry. एक मिनट यार, ये बैंगर बटन दबा दे रहे हैं लोग मेरा। Scanning. Kuvaki ammunition fully loaded. Preheating complete. The cannon is going through its... all right. Assessment. Not enough time. Emergency brake will cause internal explosion of stored Kuvaki. Damage assessment. No! I mean a manual brake, the primitive kind. A manual brake. Understood. Why? Roger that. आ गया कट सीन। We are out of time. हैं? क्या करेगी नेवा? ए! Damn, she is jumping like Hulk, भाई। All your efforts have been futile. It is too late now. Perhaps you're right. Why aren't you running? मून मैरो यूज करना चाह रहा है क्या वो? कई लैंग्वेज। भाई फटुई की उधर भी पड़ गया। गॉड डैम, ये कौन सी शील्ड यूज कर रहे हैं तू? ओ ये गिरी नहीं। डैम, ये है पावरफुल भाई एक्चुअली। एनो की गन। ओ भाई, एमो खत्म हो गई। ओह शिट, दैट्स क्रेजी वे। मतलब लेकिन रेनियर का तो काम हो गया मेरे ख्याल से ना, जो करना चाहता था बेसिकली, थोड़ा बहुत भी। Is he reborn? Yes sir, welcome back. पूरा तो रिबॉर्न नहीं हुआ है गैस, बट नहीं हो गया वो। रेरीर ब्लास्फेमी अगेंस्ट दैट। ओ माय गॉड, फर्स्ट मतलब सिनर है वो बेसिकली। फर्स्ट सिनर तो क्या बोलूं। अबे ये क्या है? स्पेसशिप और लेजर। वो आइनो की आइनो ने जो नासा टाउन में गन बनाई थी, लेजर गन, वो मारा उसने। और एनएफआ ने उसकी डायरेक्शन बदली बेसिकली, ठीक है, टू स्टॉप द वो भाई। Sluggish, torpid. This body is a disappointment. ओ ये
पूरा रिबॉन नहीं हुआ क्योंकि जो भी वो करना चाहता था उनके उसके साथ पानी फेर दिया इन लोगों ने। इट्स लाइक ए ह्यूमन बॉडी मेरे ख्याल से। 10%, oh 10% of my original strength. 10% of my original strength. You've ruined Damn. everything again. अगर वहां पे NFO नहीं भी करती तो शायद से ये लोग शील्ड अब तैयार ही थे बेसिकली। भाई यार फ्लिंस ने भी क्रेजी किया है, मतलब ट्रैवलर की तो फिर भी जो भी था, फ्लिंस इज द हीरो इन दिस एक्चुअली आल्सो। हाँ ये फिर भी पूरा रिबॉन नहीं हो पाता। ये कौन है? ये सिनर है एक, कुशल भाई जो कानडिया के 5 सिनर नहीं थे उनमें से एक है ये मर गया था बेसिकली, ठीक है। इसके जो शरीर के थे वो टुकड़े टुकड़े हो गए थे बेसिकली, ठीक है। तो ये डेड था, लेकिन ये डेड से भी रिबॉर्न हो सकता है, लेकिन इसको इसके फ्रैगमेंट्स वगैरह वापस चाहिए होते हैं, ठीक है। लेकिन इसको मिल नहीं पाया। तो ये अभी बेसिकली ये 10% है जो इसकी ओरिजिनल फॉर्म थी, उसका 10% ये रिबॉर्न हो गया है बेसिकली अभी स्टोरी में। You didn't get a human body back, did you? Let me guess, you didn't. खुद्दू कट गया भाई इसका तो। बाकी सिनर्स को भी याद कर रहा है ये। उसके हाथ में देख रहा हूँ। Watch out! Whatever rationality he still had when he was searching for his body is gone. All that's left is the calamity you see before you. A monster fueled by... Matters not. Having a heart. Being human. It's all irrelevant. Completely and utterly in you. Matter not. Does anything in this world. भाई टू बी ऑनेस्ट ये सीन इतना फुद्दू लग रहा, कितना पावरलेस लग रहा भाई ये। आई डिडंट थॉट कि पहला सीनर इतना चूजा सा लगे मिलेगा हमको। 100% पावर नहीं मिलना चाहिए दल्ले का। हाँ वही कह रहा हूँ, लेकिन इमेजिन ना जो कि लाइक पहला सीनर मिला हमको दिखने को और वो इतने सॉरी, मतलब इतने कमजोर हालत में है वो, सॉरी स्टेट में नहीं। फिर भी काफी है इनके लिए 10% भी। But the truths you seek are so insipid. How laughable that you should die for their sake. नाविया की गोली ऐसी क्या चल गई? ये क्या था? Oh, and roll. The unknown is but a fog to be dispersed. Knowledge is the true pillar of the world. Okay. You're not the only one who got stronger. Polonia! Damn, he has speed. Oh. Okay. हमें नहीं। हमें ओवर करा दिया सिंड्रोम के, उससे भाग गया वो। ओह नो, आई थॉट भाग गया। अब इनके लाइफ टाइम का बजट लग गया होगा इनको।
ओह डोंट टेल मी कोलंबिना आ रही है। नहीं इट इजंट ओवर। कोलंबिना ने वापस बुलाया उन्हें। ओह बचा लिया भाई इसको एक्चुअली आई गेस। इनको बचा लिया भाई। उसी ने बुलाया ना वापस। लॉल भाई ही कैन टेलीपोर्ट। ओह माय गॉड मुझे लगा वो इंटरफेयर करने आएगी लेकिन हाँ उसने सही किया एक्चुअली बचा के। वो आती भी तो कितना ही फर्क पड़ता है गेस। इज द सिनर भाई भले ही 10% हो। It seems this young lady aided in our escape. You have my sincere gratitude, dear madam. The flowers here bloom in such peaceful silence. I imagine you would not have invited anyone here were it not an emergency. ये आती भी तो वैसे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता मेरे ख्याल से वहाँ। I imagine you would not have invited anyone here. Would not talk about a good judge of character. Oh. I take it that means you've been here before then. In that case, I count myself fortunate to be your associate. In that case, what did you do that for? I studied his abilities inside out, equipped Polonia with comprehensive countermeasures. We were going to settle the score. But he still broke through, did he not? What? You expect a battle to be completely one-sided? I just didn't expect him to have no sense of honor whatsoever. Polonia would have been fine in a head-on clash, but battles just... यार इनके फेशियल एक्सप्रेशन ऐसे क्यों है बिल्कुल। रेर करना क्या चाहता है भाई तो मेरे को भी समझ यार। रेर बेसिकली रिवाइव होना चाहता है ना फुल फॉर्म में वो। बेसिकली मेरे को तो यही समझ आया पूरी स्टोरी में कि जो भी वाइल्ड ऑफ द हंट है और इसके बॉडी फ्रैगमेंट्स ही हैं वो जो भी बकचोदी है इधर थ्रू आउट। और जो इसके पास था वो फ्रैगमेंट वो उसका हार्ट था ठीक है। एंड उसने कुहाकी के नेचर को अडेप्ट कर लिया है ठीक है क्योंकि कुहाकी और वाइल्ड हंट वाला जो भी सीन था तो वो एक साथ एक जगह पे मतलब नहीं एग्जिस्ट कर पाते थे। कुहाकी होगा तो उस जगह पे वाइल्ड हंट नहीं रेज होता था। लेकिन रेरीन या जो भी नाम है भूल जाता हूँ मैं उसका रेरीर तो उसने वो कुहाकी अडेप्ट कर लिया एंड नाउ पता नहीं यार थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया। लेकिन तो So you actually thought you could win. उसको मारा किसने पहले? वो क्या बोलते हैं वो मूव इसी ने बताया था डेमसलेट ने। क्लियरली समझ नहीं आया मेरे को बट इसने बोला था कि वो मून से मरा था किसी मून की वजह से कहीं उस डोमेन में भेज दिया था उसको और वहाँ से वापस आना इम्पॉसिबल है बेसिकली ऐसा बोला था। क्योंकि जब डेमसलेट ने पूछा था फटुई से ठीक है कि रेरीर है कौन करके तो फटुई वालों ने बोला था कि तुझे नहीं पता करके बेसिकली क्योंकि ये मून गॉडेस है ना तो मून के बारे में इसको बेसिकली पता ही है करके। तो तब फटुई ने बताया था इनको कि वो मून या फिर समथिंग लाइक दैट वहाँ पे किसी डोमेन में जाके वो मर गया था और वहाँ से वापस आना इम्पॉसिबल है। अब उसको क्या बोलते हैं क्या था अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा बट मैं समझ रखा हूँ ठीक है। अब वो वहाँ पे मर गया और उसके बॉडी के ना जितने वो बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में मतलब टुकड़े हो गए थे स्कैटर हो गए थे वो। अब वो शायद हंट ऐसे करके जो भी वाइल्ड हंट रेज हो रहे हैं समवट उसी के बॉडी के फ्रैगमेंट्स हैं वो। और जो फ्लिंस है फ्लिंस की लैंटेन में शायद एक फ्रैगमेंट है या फिर वो तो वो उसका हार्ट है ठीक है। एंड रेरीर वापस से रिवाइव होना चाहता है ठीक है एंड वो अपने प्राइम में जाना चाहता है या फिर जो भी है वो ऐसे ही हो सकता है। काफ़ी टाइम तक तो कुहाकी जो नॉर्थ ग्राई में है इसकी वजह से वो हो नहीं पा रहा था क्योंकि वाइल्ड हंट मतलब दे अपोज ईच अदर ठीक है। लेकिन उसने अब उसका नेचर अडेप्ट कर लिया है एंड कुहाकी यूज़ कर सकता है वो जैसे हम लोग के ट्रैवलर वगैरह यूज़ कर सकते हैं तो इसीलिए पता नहीं थोड़ा कंफ्यूजिंग बना रखा है। तो बेसिकली वो रिवाइव ही होना चाहता है इतना ही। Have you been taking care of yourself lately? Your calculations seem to have deviated quite seriously. Perhaps you could try sleeping and rising earlier, or you could adopt my previous अलग इन लोगों का कट सीन देखने को भी ना। Columbina,
I tolerated your nonsense previously. ये इनका सबसे लंबा कट सीन होगा लगता है मुझे। सारा बजट लगा दिया होगा इनने साले। Listen here, Colombian, I tolerated your nonsense previously because we were colleagues. There's a Fatui warrant out on your head. And don't you forget that. Don't make me fight you right here and now. Oh, I was just a little concerned about you. That's all. Just like that time when you weren't मेरे को लगता था कोलंबिना बहुत बुरी होगी। research. ये तो भाई बहुत शांत है, मतलब क्या काम है नेचर से। पता नहीं, वैसे पहला ही पार्ट है हुनूस। लेकिन मुझे हमेशा से लगता था ये अपोजिशन होगी हमारे अपोजिशन पार्टी में, लेकिन साला है तो खुद हेल्प चाहिए इसको। हेल्प भी क्या चाहिए, बस मून में जाना है इसको। That was none of your business. And don't you ever drag me out to one of your freaky hovels again. Come on, hello. Well, anyway. यहाँ आते आते लेकिन एक चीज समझ आ गया, फटुई को ना ऐसा कुछ वो नहीं है कि वो लोग डायरेक्ट ऑर्डर्स नहीं लेते हैं बेसिकली, जो भी फटुई हार्बिंजर्स हैं। नहीं तो चाहती तो सेंट्रो उनको पता है मेरे ख्याल से यहाँ के बारे में, तो ये पहले ही बता देती वहाँ या जो भी था। ये लोग अपनी मर्जी का ही करते हैं। जब हम लोग ने इन्फिल्ट्रेट किया था, सेंट्रो ने हमको जाने दिया था कि उसका इंटरेस्ट नहीं है हम पे या फिर हमारी चीज़ों पे, तो ये लेफ्ट। तो इतना तो समझ आ गया कि फटुईस का कोई डायरेक्ट वो नहीं है, एकदम बाउंड टू नहीं है कि ऑर्डर लेना ही लेना है उन लोगों ने। दे आर अपनी मर्जी के मालिक, उनका मन करेगा तो करेंगे, नहीं हुआ तो नहीं करेंगे। I was worried about you, too. Not only because the remains of the eternal moon goddess cannot fall into his hands, but also... अच्छा हाँ ना, वो तो और पावरफुल हो जाता वैसे। And then अगर उसके पास मून फ्रैगमेंट जाता तो वेव को। I brought your associate along for the ride, too. But that was as much as I could do. You're not afraid to speak your mind, miss. I like that. Please, call me Flint's. It is my... Still, what do we do now? Riri's gotten stronger again. At this point, it doesn't seem like we can beat him. 10% में भी बीट नहीं कर सकते तुम उस बंदे को भाई, लिटरली आओ पावरलेस भाई, लिटरली। We did block most of the Kuvaki, so I'd say we've put मैं a lid on एक्चुअली his plans for now. इम्प्रेस्ड हूँ फ्लिंस से भाई। फ्लिंस कितने इतनी खुआकी कैसे ब्लॉक कर दी। चलो ट्रैवलर का तो समझ आता है वो कि ना वो नीचे वहाँ जाके चीज़ों को अडेप्ट कर लेता है, वहाँ की पावर यूज़ कर पाता है। लेकिन इतना ट्रैवलर जितना पावरफुल थोड़ी होगा फ्लिंस। लेकिन कट सीन बढ़िया था, कट सीन ही बढ़िया था। क्या साइड put lid on his plans for now at least. We still don't know what his aims are, and he may continue gathering power. लेकिन हाँ, So we उसका must be बेसिकली very अभी तक कुछ careful. वो नहीं है कि उसका असली मकसद क्या है। मेरे को जितना लगा उससे तो रिवाइव ही होना चाहता हूँ। After you left, I could no I longer. can no longer sense his presence. क्या वो भी चले गया? That means it's safe out there for now. A question, if I may, kind Miss Columbina. When the cannon's Kuvaki beam was deflected earlier, I saw several bolts of energy streak toward Hisi Island, only to be blocked. Did you also have a hand in that? No. I see. Oh yeah, the cannon veered off course in the end, didn't it? Paimon wonders how Aino and the others are doing. Let's head back and check. भाई आइनो की लेकिन जो मशीन थी ना अंजू बैन, मैं तो बहुत हल्के में ले रहा था उसको भाई। शी इज जीनियस एक्चुअली भाई, सही में। In that इसने case, क्या Miss मशीन बनाई है भाई। Columbina, I shall not disturb your serenity any longer. Thank you. मुझे once आइनो का again for कैरेक्टर coming काफी to the पसंद आया rescue. भाई कितनी रिस्पेक्टफुली बात कर रहा है यार फ्लिंस, लॉल। Go now, all of you. Do not worry. Do not worry. भाई साहब क्या टेलीपोर्ट मारा ना इसमें, मजा आ गया। इसकी पावर ज्यादा यूज हो गई लेकिन My strength still. It seems my time is running out. अरे यार
इसके साथ क्या क्या दगा हो गई, इसको क्या हो गया चाहे। ओ बर्थडे अलर्ट, उसको क्या, कोलंबिना को क्या हो गया भाई, बार बार पहले स्ट्रॉन्ग एक्ट करती फिर उसके वो जा रहा है। मेरे को लगता है नेक्स्ट एक्ट में भी कोलंबिना को कुछ नहीं करने वाले, बहन के 2-3 क्वेस्ट खींचेंगे अभी, जिस हिसाब से लग रहा है मुझे। हेलो हाइपर, व्हाट्स अप? Fortunately, we were able to minimize the harm. Only a few यार townspeople ज्यादा were hurt. अंधेरा नहीं हो गया है ना, रूम में ज्यादा लाइट हो गई उस तरफ, बट कोई नहीं। क्या चल रहा है गेंशिन में? We got the first sinner in action with a 10% power, bro. But the Reikir of Solnari has now gained a complete form. While we still know... It seems we have done something akin to releasing a vicious cuckoo sword. देखूंगा मरा कैसे हो भोसड़ी का। I'm sorry. Is no one here familiar? Paimon knows what you mean, but that analogy... He said that this world means nothing to him, so it is possible that he doesn't have a reason to fight us at the moment. Okay. If his objective had been revenge alone, we would likely have no recourse. Is there, still time for me to tender my resignation? Jehoda. Just kidding, just kidding. Don't worry, boss. I know there's no running now. So my cannon, my pride and joy was a hindrance rather than a help. Bye. You know what? Crazy. I'm gonna dismantle it right now. That's right. And it still works on normal wild hunt anomalies. Don't let this get you down, I know. Flints, we'll need you to attend to the aftermath with the Lightkeepers. Don't worry, I've explained everything to them. You're in the clear. My thanks. For that and for everything else Had you been willing to show yourself in public more often, you would not have been so easy to isolate, you know. Point taken. I suppose that's one way I'd benefit from भाई इनके replacing facial Sergeant expression Major देख Sosi. के पता नहीं हंसी आ जाती है। You mean you're being promoted? Was Paimon the only one who didn't get that? Well, if you've got a moment. There's a certain gentleman I'd like to send off on his final. कमर बार कौन है? अच्छा, मेजर सर्जेंट। Here he lived as if it were a mere matter of course. Slowly, I have achieved too little. Perhaps his end was tragic. But I remain proud of the way in which he illuminated the path for others. Every shadow born of... Poor guy. I've heard that one too. Is that so? Well, you're right, but we will pursue him to the last. Even if it is not dissimilar to the role of a graveyard Why do I keeper. still find her annoying? कि कौन Genshin? Sorry, Paimon. We do not एक seek to cutscene bring आएगा the शायद dead लास्ट back में to बोल के life, गए लोग। only to grant them peace. वैसे तो सारे हो गए हैं एक्चुअली मेरे ख्याल से। What are you two talking about? Care to explain? Okay. क्या बोला इसने? Either way, the Lantern Fae is not playing the leading role in these Lightbearer. With your, even as we hurry on, bruised and until it closes its eyes in the depths of night. And a thank you for Yeah, Paimon. Pre-recorded है शायद। अच्छा ये वो वाला सेम डायलॉग। ऑप्शनल एग्जैक्ट क्या है? Option, leave this place. Chat within a file, Lauma optional. Additional तो नहीं कर रहा मैं। Hey, it's the Wanatar. Should we go after her?
else you'd like to meet? एक्स्ट्रा बात गेंशिन में नहीं करूंगा. अबे ऐसा कल दिखा दे. सुनता वैसे भी लेके जाएगा ये मतलब. वो कोलंबिना इधर आई है. व्हाट द हेक. Columbina! What are you... Was it not you who recommended such walkabouts to me? अबे यहाँ कहाँ आई है? यूनो की स्किल प्रायोरिटी क्या है? Aren't you afraid the Fatui will see you? Alt skill forte. Zandrone seems uninterested in my capture. Normal भी कर लेना. The others are unlikely Because to obviously making contact damage at तो all. देती है. They have more troublesome affairs to deal with. Rare, if I had to guess, he's a threat to all who live in Nordcry. Well, it's good to come out for a walk either way. So, how do you feel? Is Nasha Town? The flow of Kuvaki is somewhat turbulent, and the people are ill at ease. However, is this where you purchased the dishes you treated me to? Are you serious? That's what she's concerned about? Berries and fried meat? Well, we can take you to grab a bite if you'd like to. There's all sorts of delicious stuff out here that you won't get to try at home. You've been quite subdued. Thorny questions on your mind, perhaps? I could not gain any insight into his schemes, I fear. Now that he has donned a shape and form, selling his power short would prove a fatal error. But that power of his plays host to an obsession that borders on mania. I cannot say if that fixation is directed at the moons or at something else. Perhaps understanding the subject of his fixation shall prove key to repelling him in the future. रेरियर का नेक्स्ट में ही होगा जो होगा चैट. Well, Zandrone's daily routine is highly irregular, while the doctor often orders people around. As for आलेकिन अभी इधर है? नहीं. Was that not what you were curious about? Well then, have you been to that experimental design bureau of theirs? That weapon will play a key role in the Tsaritsa's plan. Okay. That's what I've heard. And what plan is that precisely? Well, I cannot say I care. I care. 6.1 में देखना है स्टोरी क्या होगा. यप वही 6.1 में क्या होगी वो मेरे को तो पता नहीं. कुक करते रहेंगे ये लोग. देखना कुकिंग स्ट्रीम है इनकी. I've been thinking about our spaceship. I could look into the Eternal Moon's marrow for you if you wish it so, but after our previous attempt, I suspect your spaceship has been intentionally hidden away. Perhaps someone has certain truths they wish to hide from you, and I doubt there are many who could accomplish such a feat. Okay. I still wish to return to the moon that belongs to me. भेज दूंगा तेरे को मून पे. रुक तू. Where the answers lie buried. तेरे को भेजूंगा मैं. रुक जा. मून पे वापिस साड़ी. 6.1 में पता नहीं क्या होगी. Hey, what's up? ये तो यहाँ है. Interesting. You followed me this far. Why not show your face? Lol. Right. Right you are. I forgot to introduce myself. The name's Varka, Knight of Boreas, and Grand Master of the Knights of Favonius. वहाँ से लोग भाग के आए हैं. वार का उसके मुंह पे चले गया. बताओ. ये तो बात कर रहा है उससे. फाइट कहाँ कर रहा है? लोग कह रहे थे फाइट होगी. What the fuck? Hey, not a bad haul. Go to Frost Moon. मैं क्यों जाऊँ? Frost Moon है. अब एक सेकेंड.
अरे यार मैंने वो भी तो नहीं किया है। ओ ये तो वो है। Many insects have a compulsion to follow. लेट्स गो बेटे, मिल गया। And humans are the अच्छा मेरे, मैं वही कहूँ, मेरे क्वेस्ट इतने जल्दी कैसे खत्म हो गए? व्हाट द फक, इतने ज्यादा क्वेस्ट बचे हैं मेरे। 10 पुल कर लेता हूँ मस्त। दे दो यार, दे दो प्लीज यार। ये लोग पिटी पे ही देंगे यार। हट, 46 की पिटी हो गई, ये दोनों ही नीचे। हट साला, बता 3 चोरी करते रह जाऊंगा क्या दिन भर? 4 पुल, 46 50 की हो गई रे। 46 50, हाँ इसको मिला के 50 हो गया। ये मून पे जाने के लिए, मून पे जाने के लिए इसे, हाँ उसका घर है भाई, उसको पता भी नहीं है मून उसका घर है नहीं है, खाली बकचोदी कर दिया लगता है। ये सोडा है मित्र? कोई नहीं मित्र, कुछ सोडा वोडा ना है। तो अब क्या किया जाए? ये भी ले लिया हूँ 40% करके। तो ऐसे ये क्या है? शो मेकर चिल्ड्रन गो बेयरफुट वॉइस में दे रहे हैं। आईनों की चड्डी वड्डी। हेलो हनी बानी। ओ एक सेकेंड, अरे कहाँ? अभी चेस्ट खुला कहीं भाई अभी। ये था क्या? Hey, not माल लग रही हो ब्लैंड भाई, माल ले लो फिर, मुंह पे माल लोगी। बताओ लोगी? ओके, ये क्या सिस्टम सेट कर दिया है? चौधुमल। ये क्या है? ओए मैं नीचे गिर गया। ओए अरे व्हाट द फक, नीचे फेंक दे रहा मेरे को मदरचोद। कहाँ से जाऊँ मैं? ओ इधर ही जाना था मुझे एक्चुअली, पता नहीं। नोई oh, in the end it doesn't even matter। ठीक है ना, चोरी नहीं मित्र। Take me up. ये क्या है? गोल्ड एक यार, इसकी भी स्टोरी है क्या? टीम हगीज हो रहा है क्या? हो गई है हगीज, अब तो कुछ नहीं है। अरे मैंने क्यों बात कर ली इससे? There's so much space on this. Wait, in Nepha, we should still head over and check on. बताओ, एक हम लोग को एक वो मिला, ठीक है, एक पहला सिनर मिला और उसकी भी हगीज हालत थी यार अभी तक। बताओ, हगीज हालत में मिला वो भी साला। कितना बज गया? अरे मेरे को मार्केट भी जाना है, 4 बज गया। उधर इन्वेस्ट खेल लेता हूँ थोड़ी देर, शाम को स्ट्रीम नहीं करूँगा। क्या गंदी आदत लगी है, राह चलते इंसान से बात करने लग जा।
True, you true. notice and we're here to help. Ah, Paimon and the Traveler are the first. ऊपर चिपकी होगी ना. Neffa! What the? Yeah, it does. The logic of your conclusion is unsound. My calculations suggest trapping me here was a serious decision for Aino. Wait, so Aino's the one who did this? Ah, good idea. Request not feasible. Aino has locked down the control system. Analyzing further options. Conclusion. The priority decision. I will temporarily override one of Aino's rules and inform you about the hidden control system. But first, I must be certain you will keep it a secret. Okay. Sufficient grounds. Once you have located all the specific robots, you can unlock the control system. This is the back door Aino established for herself, as she often forgets the password. Okay. Okay. Lizard tail. Found you. Found you. Found you. बहन 9 है भाई 9. Found you. ए भाई मेरे पीछे क्यों आ रहे हो तुम लोग कुत्तों की तरह. How the heck am I supposed to? Oh, उधर भी तो है, ऊपर भी तो. Take me up. तुम लोग कैसे आ रहे हो ऊपर? मैं तो जा सकता हूँ. Oh no! Return to the skies. Detecting companions in need of help. Assistance in progress. Marking high probability search areas. Wow! What a crazy hiding spot. Aino wasn't taking any chances, was she? Return to the Oh, skies. वो रहा. पापा मिल गए जो मिल्क लाने गए. Zing zap, mechanical claw backup, command. Oh, you okay, Neffa? Inspection in progress. All functions normal. I am unharmed. So... Compiling relevant data. Oh, that... I used that term because Aino... What? If Aino manages to use her genius for destructive purposes, all of Nodcry will be facing a crisis the likes of which has never been seen before. When I attempted to stop her, she trapped me with that device. Fortunately, I was prepared for that possibility and was able to post a request for... Oh! Correct. Yeah. Fortunately, you... You got it! ये स्टोरी है मैं बाद में करूँगा यार अब. है ना? क्या चीज़ है पोर्टेबल बियरिंग? Move out. Our objective... Track down the... I know. Neffa, how did you get free? I thought the Kuvaki would be more... You can't do this! Aha! And I have to go now, or Cranclank's 70% suite will get dismantled and sold for parts! Clinklank Legion, move out! Move out. What are we doing? I know प्यारी है. Aino's sugar intake has already exceeded normal levels. Desserts are the only thing that can get Aino to calm down, and I have already used up the allotment I had prepared. Okay, what's with the staring? Paimon's not one to leave leftovers, you know. Aino, why don't you calm down for a sec? What the fuck? Still treating me like a kid, huh? At least it worked.
अबे यार मुझे नहीं पढ़ाई करनी. I know you guys think I'm making a big deal out of nothing. पढ़ाई नहीं करेगा तो क्या करेगा फिर? Robot I was about to add to the workshop, just like an Nitro. 1 महीने से ऊपर हो गया, एग्जाम खत्म नहीं हो रहे अब मेरा. तो मोटिवेशन भी निकल गया. We can come up with a plan. Thanks. And about earlier, I'm sorry enough. Phew. Looks like the military escapade's on hold for now. Let's go back to the workshop. जेनेक्स से ले ले, मोटिवेशन अगर चाहिए तो भाई. ये है क्या चीज? पोर्टेबल बियरिंग. इन्हें में तो वहाँ है. झूठ बोलने क्या उससे? Nothing's going. There, I know. If nothing is... You really? I could not sit. Please get some rest. I'm gonna give each one a hit on the head with my wrench. यार स्पेस बार मेरा किसी दिन खराब हो जाएगा ऐसे. Paimon! Hi, I know. It feels but any... I know. It appears my analysis was correct. इसके बाद चैलेंजेस करना, ये स्टोरी के बाद मैं भी कर सकते हो. Huh. Like, it's nothing major. अच्छा स्टोरी बाद में भी कर सकता हूँ. Oh, okay. Last night they crashed right into my workshop. Do not be alarmed. Treasure hoard. Sorry. Yeah. Before Nefa came back. I already cleared. Wow. Well, nice. No, not impressive. There's a trick. Correct. My bot's and we'll find it. Yeah. How are you going to do? By staring him down. Okay. I don't know. If it doesn't work, I'll just drag them in. Whoa! How's that fair? Okay then. Alright, listen up. We'll let you off. But just... You stared them down alright, traveler. Notice anything off? Yep, that's it. What did I say? Little psychological pressure. उसका इमोजी देखो भाई. I know, Ineppa, we caught him. Do you need to check him over? Analyzing Huh. Must be the processor then. Let me open him up. Uh-oh, he's on the run again. Catch him! What? Is that him? How did he get so big? No, those are scrap sorting bots. It appears he can still connect to them. Okay, well now I'm getting curious. There's more going on here than it, but we need to try sucking him out. करना क्या है मुझे? ओ ये रहा. Oh, finally. Wait. Huh? You? No, it's not possible. There's no way. It seems like he can communicate. Can you mind your own business? Jeez. Oh, just... The fortress of... What is it again? Millipede. Yeah. Would you stop with the personal questions? So intrusive. Whoa! What do you mean, girl? I'm a girl. Okay, well, I'm not sure what happened, but something is definitely wrong here. This isn't the prospector bot well, guess the only way to find... Don't come any closer! Somebody help! It's okay. I'm a girl, too. I'm a girl too. That doesn't change anything?
Apologies, traveler in Paimon. Perhaps it would be. रुको यार में कितनी पीटी हो गई है हिंदी लाइन आज मैंने 20 पुल किए हैं इधर पे नॉट ओनली 10 21 तारीख को 20 पुल होने चाहिए थे दस ही अपडेट हुए हैं 35 36 46 हो गया 46 50 छाट गेम गर्मी उधर हाँ आज तो हो रही है यार बारिश वारिश कुछ नहीं है बाद में करूंगा अभी थोड़ी देर बदलेंगे खेल के फिर यार फिर मार्केट जाना है कल नवरात्रि है नवरात्रि का सामान लाना है दोनों ने संग मर आएगी तुम्हें माफ करी माँ तुम भी बन रहे हो 9 कन्या में से एक के कन्या क्या Artetia doesn't need Siakona to be good. A majority of the time, I enjoy the Wuthering Waves community, but one thing that really irks me. What? ये क्या हुआ हाफ स्क्रीन में वो तो सिर्फ ये एक आज सवेरे उधर नहीं ये शाम को खेलूं क्या शाम को तो स्ट्रीम नहीं करूंगा मोस्ट प्रोबेबली तो अभी खेल के बंद कर देते हैं राइट डेलीज एंड ऑल Symphony of life. Absolute futility. Thus you fall. Heed तू रेड रेसिंग ऑन करके खेलता है ब्लेज़ू हाँ शायद if I remember so yes Sleep in the whispers of sirens. diminish. Loading. Rectify.
I'll keep you company. Rush forth in fury. हाँ, जब से तुझसे बात की है फिर उसके दिन डिफरेंस देखने के बाद शायद जब से अपडेट आया ना उसके बाद से रे ट्रेसिंग ऑन किया मैंने। How rude. This will be fun. तब से मैंने रे ट्रेसिंग ऑन रखा है। मैक्स रेटिंग्स प्लस रे ट्रेसिंग ऑन करके मुझे न्यू एरिया में 70-80 FPS आ रहे हैं, मैंने ऑफ ही कर दिया। मैं मैक्स सेटिंग से नहीं करता ना फिर शायद से कस्टम कर रखा मैंने, हाई पे रखा है, मैक्स तो नहीं करा। DLSS एक सेकेंड, यही DLSS ही रे ट्रेसिंग अलग होता है ना। DLSS ऑन किया मैंने, रे ट्रेसिंग तो है नहीं मेरे में, यही होता है। आई एम सो नूब, तो नूब। अगर मैं बंद करता हूँ तो ये लैग ही दिखाता है ऐसे, ये ऑन करता हूँ स्मूथ हो जाता है। वेट, तेरे में ऑप्शन ना, मेरे में ऑप्शन ही नहीं है, मैं तो भूल ही गया। और मेरे में तो ऑप्शन ही नहीं है। अबे 36 Ryzen 5 5600 है ना मेरा। माय बैड, माय बैड टोटली। मैं नहीं करता ऐसा, माफ करी मां मैनू। किधर जाएं? I mean, मेरा भी राइफ 7600X है तो मेरा 56 है ना। 56 में नहीं आया था यार, 3060 के लिए दोनों में से एक चीज की वजह से नहीं आया। 3060 में तो आ गया था शायद, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली। Meet symphony of life. Will the approaching sounds be beautiful enough? Absolute futility. Thus you fall. Heed the echoes. मेरा गम कितना 40 सीरीज में आया बस। ओके, पनौती भाई, पनौती अनौती न्यू। तू साले तू खुद पनौती है। बैंक जिसका भी नाम लिया कल जीता है वो, ठीक है। तू अपने से हारा है बस। हाँ, नहीं तो अंकित का नाम लिया, अंकित जीता। ककासी का नाम लिया था, ककासी जीता था। हाँ, नहीं तो मैं ठीक हूँ। तू कैसा है बता? Will the approaching sounds be erased? Symphony of life. La 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 la. अबे कलाइयो, अच्छा, absolute futility. चला प्रोलो का रेंज भी है भाई, देख रहे हो मेहंदी लान। अरे भाई 2.7 का बैनर क्या आएगा? 2.7 का बैनर गैलवेरिना और लूपा एंड क्यूआन एंड एक और कैरेक्टर था यार, कौन आने वाला? जानी है ये आने वाले शायद। अब पर कितने, अभी तो लाइव स्ट्रीम आने वाली है, उस दिन देख लेना प्रिंस भाई। ऑर्डर है ब्रोलवा ऑटोमेटिकली भाई। लेकिन जीत ने मुझे सेव कर दिया भाई। यार मुझे लगता है शाम को बुद्रिंग में खेलना ही पड़ेगा मेरे को, टू बी ऑनेस्ट। मेरा ये भी बच रहा है 15, वो भी चाहिए मेरे को।
ठीक है, क्या बोलते 15 डेटा बैंक वाले भी अभी से फार्म कर लूँगा Q1 के लिए, सही रहेगा। क्या किया मैं? अरे ये कर दिया ना टाइटल भाई, ब्रेथ सेविंग थिंग, ये तो मैं कर लूँगा कि बहुत ईजी है। ये भी करना है, अभी कंप्लीट करके रख दूंगा तो फटाक से। अरे वो 6.1 में गेंशिन में सुना था जेलोनिन आएगी, पता नहीं यार, आएगी तो बढ़िया ही है लोगों के लिए, आएगी तो चंगा है जी। रिलीज तो कर ही लेता हूँ, नहीं भी करूँगा तो क्या है, राइट। एक सेकंड, क्या टाइटल दिया चेंज? नाइट कीपर, ओह नाइट कीपर्स ऑफ ओशियंस, ये भी सही लग रहा है सर। यार रीत यार, ये बैंकर तू ये लगाएगा ना? नहीं ओ भाई, ये कितना मस्त लग रहा है बे, इन लोग का S6 का कितना मस्त मस्त हुआ है चैट, ओ माय गॉड। तेरे में प्रोलोवा का ये होएगा, तू करेगा। जानी का, ओ जानी का ब्लैक में भाई मेरा फेवरेट है। कर तू S6 जानी, डबल आर को आने वाले टावर डिफेंस वाला इवेंट क्लिक करते हैं, कितना सही बजता है, वांट अ फुल वर्जन ऑफ इट। ओ भाई मस्त है ये। अब क्या है, अब क्या छोड़ दिया? कैचर इन द टाइड, व्हाट इज दिस कैचर इन द टाइड? ओ ये लगाता हूँ। बाकी लोगों के टाइटल क्या है? हैवॉक, रीपर, मेरे पे ये भी नहीं है, बता रहे हो अभी, अभी तक ये भी नहीं है मेरे पास। हाँ ओ हाँ ना, Nvidia का S6 है भाई, मैं भूल गया था। टाइम जाने का लग तो क्रेजी रहा है ना। मेरा विम्परिंग कर दो, मुझसे एक भी नहीं हो रहा। क्या विम्परिंग? विम्परिंग अभी नहीं यार तनवीर भाई, अगली बार जब खेलूंगा ना तब देना, ठीक है? अभी स्टोरी करके मेरे को लग गया बहुत ज्यादा बोर एंड आलस। अब क्या, ऐसे कुछ नहीं है। सपोर्ट वर्सेस DPS भाई, क्यूआन और जानी कौन बेटर है? क्यूआन सपोर्ट है हाँ, क्यूआन इज ए कंप्लीटली सपोर्ट चैट, कंप्लीट सपोर्ट। मैं उसकी डैमेज स्केलिंग भी देख रहा था, इतनी ज़्यादा बेटर लग नहीं रही है टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं सही समझ रहा हूँ तो इतनी कुछ वो नहीं रहेगी। क्यूआन के बस दो काम है मेरे ख्याल से। पहला तो गैल्बरीना का सपोर्ट करना, सबसे पहला काम है उसका गैल्बरीना को सपोर्ट करना, ठीक है? क्योंकि वो एको डैमेज बफ करता है। मेरी प्रोलो का डैमेज टेस्ट नहीं किया, वो भी नेक्स्ट बार ही करूँगा। यार डैमेज टेस्ट क्या करूं मैं साले, TOA में तेरा TOA स्ट्रीम पे तो कर रखा है डैमेज टेस्ट, वही हुआ तो जानी पुल करूं, गारंटी है। देखो प्रिंस भाई, सिंपल सा फंडा है, जानी चाहिए तो फीबी होना बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, नहीं तो फिर अगर क्यूआन निकालोगे तो गैल्बरीना निकालनी ही पड़ेगी, क्योंकि कोई ऐसा सीन नहीं है आपका ना जिससे कि एको बफ हो बेसिकली, मतलब जो क्यूआन का बफ उठा पाओ आप। अभी तो ऐसे ही कैरेक्टर्स आ रहे हैं, एक DPS आ रहा है, एक उसका सपोर्ट आ रहा है, ठीक है, सब DPS सपोर्ट, तो वो कुछ पेयर में ही आ रहे हैं, तो वैसे ही निकालना पड़ेगा। अगर जानी निकालोगे तो फीबी चाहिए, ठीक है, नहीं तो फिर वो मिड डैमेज करेगी बहुत, और स्पेक्टर रोवर के साथ तो बहुत मुश्किल हो जाता है टू बी ऑनेस्ट, ठीक है? और रही बात क्यूआन की, तो क्यूआन क्या करता है ना बेसिकली, अल्ट पे उसका जो भी क्रिट रेट 50 से ऊपर जाता है ना, तो वो पार्टी में जितने भी रेजोनेटर है उनका क्रिट डैमेज बढ़ा देता है वो अप टू 30%। फॉर एवरी
1% of QAn's crit rate over 50. Their Tastes good. skill increase the crit damage of all resonators. Sorry, this skill increase the crit damage of all resonators by 2%. तो मतलब बेसिकली 65% क्रिट रेट तुम्हें क्यूआन पे होना चाहिए. दैट्स मोर देन इनफ. ठीक है. और उसकी अल्ट का ही डैमेज का सबसे ज़्यादा मतलब मल्टीप्लायर है वैसे तो. बाकी उसके एक फोर्टे में है जहाँ पे थोड़ा डैमेज दिख सकता है हमको. उसके अलावा इतना कुछ है नहीं उसके डैमेज में. आउटरो में वो 50% एको स्किल डैमेज एम्पलीफाई करता है नेक्स्ट रेजोनेटर का. और अगर तुमने स्विच कर दिया तो वो बफ चले जाएगा. उसके अलावा तो ऐसे स्विच करता नहीं यार ये. खुद को बफ करता है शायद. 50% डैमेज एम्पलीफिकेशन खुद का करता है ये, अगर मैं सही सोच रहा हूँ ये, क्योंकि नाम से पता नहीं चलता. जब तो अरे सुनना, मेरी वीवा में 9th पे ए हुआ है तो वो बस एस कर सकता है जब भी जरूरी. हाँ बाद में कर दूंगा. मेरे पे कार्टेटिया और कैंटेरेला तो है. कार्टेटिया एंड कैंटेरेला. कैंटेरेला है तो प्रोलोवा निकाल सकते हो पहली बात. ठीक है. कार्टेटिया है तो सियाकुना लेना चाहिए तुम्हें. सियाकुना प्रिंस भाई, सियाकुना तो है बैनर पे. अगर S0 कार्टेटिया है विद सिग्नेचर वेपन तो कार्टेटिया के लिए सियाकुना इंपॉर्टेंट है. ठीक है. सियाकुना इन रोवर, तो ये तुम्हारी एक टीम बन जाएगी. कार्टेटिया, सियाकुना, रोवर, ये एक टीम बन जाएगी तुम्हारी. कैंटेरेला तो प्रोलोवा लेना चाहिए एंड प्रोलोवा काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एक्चुअल में. ठीक है. S0 सिंग मास्टर नहीं तो उसके वेपन के साथ तो कैंटेरेला भी चला सकते हो. कैंटेरेला तो आप उस पर चला सकते हो बेसिक, क्या बोलते हैं वो, स्टैंडर्ड वाले पे. वेल तो ये है, सिग्नेचर वेपन नहीं है. सिग्नेचर वेपन नहीं है तो काटी दिया फिर मड़ी हो जाती है यार. क्या अभी आपकी टीम क्या है प्रिंस भाई? बेसिकली चलाते क्या हो आप? अभी चलाते क्या हो आप? The tides have whispered of your arrival. फिर डैमेज देती है ना से. सिया को ना करती क्या है? सिया को ना क्या करती है कि सिया को ना बेसिकली ना एरो इरोजन अप्लाई करती है और आउटरो से आपके उसको बफ देती है. क्या नाम है? कार्टेटिया को 100% एरो इरोजन डैमेज का बफ देती है उसे. ठीक है. इंक्रीज का बेसिकली. Off we go. The divinity may foresee the future of the Yeah, world. arrow erosion 100 arrow erosion damage dealt to targets near the active resonator amplified by 100%. तो 100% से एरो एरोजन का डैमेज बढ़ा देती है और कार्टेटिया एरो एरोजन डैमेज ही करती है. बाकी एरो एरोजन के स्टैक्स लगाती है ओवर टाइम जो कार्टेटिया को चाहिए रहते हैं अगर नए एनिमीज फील्ड पे आते हैं. जैसे कभी वेव आती है फिर कांस्टेंट वो चाहिए रहते हैं, है ना. तो ये एरो एरोजन लगाते रहती है एनिमी पे बेसिकली. चैट हाइपर की चैट, वीवा कितना बग्ड है इस बार वाइल यूज. कम कार्टेटिया, कैंटेरेला, रोवर, एरो. फिर तो सिया को ना ले लेना चाहिए आपको. आई गेस एक टीम पूरी हो जाएगी आपकी. ठीक है. अब कार्टेटिया करती क्या है देखो. पहला तो ये छोटा सा ग्रुपिंग मारेगी ये. ठीक है. ये ग्रुपिंग कर रही है. अब देखो उस पे एरो एनिमी पे एरो इरोजन स्टैक है वो लगाने ही ऐसे करके स्टार्ट कर देती है. ठीक है. ये देखो 2 हुआ, ये 3 हुआ, है ना. अभी एनिमी मर भी जाएगा तो नए एनिमी पे भी लगाते रहेगी. एरो रोवर का तो पता ही है क्या करता है. अरे यार पहले मर गए तू. ट्राई किया मतलब तूने. अबे वो वेव रोक देती है यार. शी इज नॉट गुड फॉर दैट थिंग. विम्परिंग में अच्छी नहीं है ऑगस्टा इतनी. पता है हाइपर क्या सीन है विम्परिंग का? जैसे विम्परिंग जो इनफाइनाइट टोरेंट होता है उस पर वेव आती है, देखा तूने? मतलब कि एक ही, जैसे अभी अगर टेडी वाला वेव चल रहा है तो उसके 3 बार वो स्पॉन होते हैं. एक बार टेडी मार दिया तूने फिर दोबारा टेडी या फिर कुछ होता है. वो 3 पेयर का एक वेव होता है. तो अगर तूने सपोज तूने पहली वाली वेव में तूने अगर अल्ट करी है ना टाइम फ्रीज वाली तो वो स्पॉन होंगे या फिर दूसरे पे करेगा तो. लेकिन लास्ट वेव पे करेगा तो नेक्स्ट वाली वेव नहीं आएगी वो जो नई
नई लाइनअप का वेव है वो नहीं आता नया, ठीक है। तो ये चीज़ करती है प्रिंस भाई। रुको मैं अपने अकाउंट में जाके दिखा देता हूँ बेसिकली। और फिर 100% एरो एरोजन से तुम्हारे कार्ड एरिया का डैमेज भी बढ़ेगा ऑब्वियसली, ठीक है। सिग्नेचर से तो वो बढ़ता ही है, वो अलग चीज़ है, लेकिन Luminous energy. With style and grace. Face me. Answer my call. World हाँ मैंने प्रॉपर वीडियो देखा उस चीज़ पे। on you go. Causality overturned by my side. Pathetic struggle. तो थैंक यू। अरे कोई बात नहीं, पूछ लिया करो जो दिक्कत है, ठीक है। इतना फ्रस्ट्रेट हो रहा ऑगस्टा यूज करते तो मैंने नहीं करी ऑगस्टा। तो पता है तुम्हें अभी के टाइम पे टॉप टियर डीपीएस कौन है चैट इन वुदरिंग वेव्स? अरे जीरो स्टैंडर्ड बैनर का स्वॉर्ड कार्थिक, अरे वो स्टैंडर्ड बैनर का स्वॉर्ड कार्थिया पर लगाया है, उसका पैसिव कैसा है? ओके 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 ओके। इतना फ्रस्ट्रेट हो रहा था ऑगस्टा यूज करते करते। हाँ वो पढ़ लिया मैंने तो। अभी टॉप टियर में जो डीपीएस आती है ना तुम्हारी, वो है प्रोलोवा भाई, मजाक सेट के। मेरे को तो यही फील होता है। वैसे विम्परिंग में तो एक साइडेड ले जा रही है प्रोलोवा, ठीक है, सिग्नेचर और उसके साथ भी मेरे को लगता है बफ के बिना भी ना, पता है प्रोलोवा वाली टीम काफ़ी स्ट्रांग है एक्चुअली, क्योंकि उसका एओई और वो इतना स्ट्रांग है ना, अच्छा खासा है। अभी तो खैर बफ है, अब नेक्स्ट जब बफ उसका हट जाएगा ना तब देखते हैं क्या होता है, ठीक है। ये प्रोलोवा वाला थर्ड लास्ट चैट कौन सा? हाँ मैंने प्रॉपर वीडियो देखा उस चीज़ पे। ऑगस्टा की किट ठीक है, उससे वीवा का स्पॉन सिस्टम का है। अच्छा ऑगस्टा का किट ठीक है, इशू वीवा का स्पॉन सिस्टम का है। वीवा नीड्स एन अपडेट। ओके 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 ओके। पता नहीं, अगर वीवा में ऐसा होगा ना सुन, तो फिर मेरे ख्याल से वीवा में ऑगस्टा टॉप में आ जाएगी एकदम, क्योंकि भाई वो टाइम स्टॉप कर देगी तो 2-3 वेव तो ऐसे ही खा जाएगी लिटरली, जितना डैमेज मारती है वो। तो मेरे ख्याल से वो वीवा का वो सिस्टम वैसा क्रैक्ड नहीं है वो। कमीलिया से अच्छा क्या प्रोलोवा? हाँ कमीलिया से अच्छा है भाई, मजाक से हट के। क्रिक्स भाई क्या C2 कमीलिया है, S2 कमीलिया है, बट ही प्रेफर नाउ प्रोलोवा भाई। दैट कैरेक्टर इज एक्चुअली क्रेजी टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। विम्परिंग के लिए तो मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट है जानी दोनों। कमीलिया भी अच्छी है विम्परिंग के लिए, लेकिन प्रोलोवा हैज़ डोमिनेंस। अब वो अच्छे से तब पता चलेगा जब उसका क्या बोलते हैं, उसका बफ नहीं आएंगे। अगर उसके फेवर में बफ नहीं हो उसके बाद देखते हैं कि कितना स्कोर कर सकती है, लेकिन मेरे को लगता है काफ़ी स्कोर कर लेगी फिर भी वो। बाय द वे प्रिंस भाई, अगर आपको कार्टिटिया के बारे में जानना है ना, तो मैंने एक प्रॉपर गाइड वीडियो बना रखा है, ठीक है, तो यू कैन चेक इट आउट। ये है उसकी लिंक, ठीक है, कार्टिटिया की गाइड वीडियो की, तो देख लेना अगर आपको कुछ भी डाउट हो। उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया कि कार्टिटिया कैसे काम करती है, क्या करता है, वेपन्स का क्या सीन है, ठीक है। लेकिन फिर भी बता देता हूँ कि वेपन उसका सिग्नेचर इसीलिए मस्त है क्योंकि डैमेज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, मतलब अच्छा खासा है, ठीक है। स्टैंडर्ड वेपन या कोई भी गेम में ऐसा वेपन है अभी तक कि अटैक परसेंट पे रिलाई करते हैं सारे, एंड वी नीड HP परसेंट फॉर क्या बोलते हैं तुम्हारा ये Carteria. Basically how Viva works is it replays a tacit discord field when you finish the previous waves. अब ऑगस्टा का टाइम स्टॉप मैकेनिक उस नेक्स्ट CD फील्ड को स्टार्ट होने नहीं देता, इट्स जस्ट गेम कोड इशू। तो इशू वीवा के मैकेनिक में है इंस्टेड ऑफ ऑगस्टा, हो सकता है, क्या पता।
आई थिंक डेव्स इतने डम तो नहीं होंगे, मे बी, हु नोस, है ना। इनने पर्टिकुलरली सोचा ही होगा और शायद से जानबूझ के किया गया है ना, ताकि ऑगस्टा डोमिनेट ना करे या फिर जो भी सीन है, क्योंकि टाइम ब्रेकिंग मैकेनिक इज लिटरली टू पावरफुल। तो मैं कितना 5-10 सेकंड आराम से रोक सकता हूँ, मैं वेव क्लियर कर रहा हूँ भाई, मेरे को एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है हर बार अगर मैं रोटेशन फास्ट कर रहा हूँ। मैं देख चुका हूँ वो भाई, बढ़िया था। ओ फिर ठीक है। हाँ तो बेसिकली वही है, अगर कार्टिटिया देख रहे हो तो फिर सिग्नेचर वेपन निकाल लेना अगर डैमेज चाहिए तो, है ना। दैट्स इट। बाकी सियोगोना विल हेल्प यू इम्प्रूव टिल देन। फिलहाल के लिए तो ये यूज़ करोगे तो भी चल जाएगा। राइट, ऑलराइट। Astral modulation. With style and grace. Entertain me. The moon is full. Oh my God, ये कैसे हो जाता भाई? Future, on you go. Fight by my side. Roars of conquest. Honor cannot be sullied. Undying glory. Rulers rule. La 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 la. One strike is enough. अबे मैं सेंटोंटास की वीडियो देख रहा था, वो बीटा टेस्टर पे भड़क रहा था, कहता ये टेस्टर्स कैरेक्टर को टेस्ट करने की जगह लीक्स भेजने में बिजी रहते हैं, लॉल, विच इज़ ट्रू। वो भी बात सही है भाई, वो भी बात सही है एक्चुअली, कि लीक्स ना दो ना, मत दो भाई, क्यों चाहिए लीक्स ऐसे ना। इससे बढ़िया बेटर है कि तुम लोग पहले वो कर लो। वैसे भी कंटेंट क्रिएटर जो रहते हैं उनमें मिलता है उन लोगों को, वो पहले ही टेस्ट कर सकते हैं सब चीज़ें, एंड ना भी लीक देंगे तो क्या है, हम लोग ऑलरेडी इतने वो तो हैं कि भाई पहले दिन पे वो गाइड वीडियोस डाल सकते हैं जो लोग भी होते हैं। भाई कोई ऐसा फीमेल कैरेक्टर है वो में जो फ्लेक्सिबल टीम के साथ आता है? यार प्रिंस भाई अभी तो ऐसा कुछ नहीं है इस गेम में। लिटरली एक 5 स्टार के साथ आपको एक 5 स्टार सपोर्ट चाहिए ही चाहिए, टू बी ऑनेस्ट। 4 स्टार का कोई रिलायंट नहीं है इसमें। बहुत कम कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो 5 स्टार रिलायंट, मतलब 4 स्टार रिलायंट है, ठीक है। बता दूं, ऑगस्टा है, ठीक है, यूनोस की सपोर्ट है, लेकिन ऑगस्टा के साथ मोटिव भी चला सकते हो। एक कैरेक्टर ये हो गया, ठीक है। प्रोलोवा है, प्रोलोवा के साथ आपको कंटेरिला चाहिए क्योंकि इसके अटैक एको स्किल डैमेज काउंट होते हैं और प्रोलोवा को वही चाहिए, तो ये तो आपका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। इसके साथ जो तीसरी टीममेट है रोशिया, वो रिप्लेसमेंट है, वहाँ पे आप चला सकते हो कुछ भी। और रही बात आपकी कार्टेटिया को सियाको ने इसलिए रिक्वायर्ड है क्योंकि उसका ऑब्वियसली है ना डैमेज इंप्रूव करती है S0 पे, फर्स्ट ऑफ ऑल आउटरो से, दूसरा ओवर टाइम ये लगाते रहती है अपना एरो एरोजन, ठीक है। तो कार्टेटिया तो ऑप्शन में लगती नहीं है मेरे को इतनी, लेकिन कार्टेटिया अलोन इतनी स्ट्रांग है मेरे ख्याल से कि टावर क्लियर कर सकती है अच्छे से बिल्ड करने में, सोलो भी, ठीक है। तो सिग्नेचर वेपन चाहिए, बट लूपा ब्रांट एंड चांगली, दे आर द टीम जिस टीम में मुझे लगता है कि ये मोस्ट स्किपेबल टीम हो सकती है, ठीक है। चांगली एंड ब्रांड ये दोनों काफ़ी हैं मेरे ख्याल से, ठीक है। लूपा इतना ज़्यादा भी वैल्यू वो नहीं करती, सैनवा से भी काम चल जाता है, लेकिन हाँ लूपा के आने के बाद काफ़ी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है टीम की। जानी यार थोड़ा सा वो हो गया, फीबी चाहिए ही चाहिए जानी के लिए। DPS बहुत स्ट्रांग है लेकिन फीबी चाहिए ही चाहिए, ठीक है। कार्टेटिया खुद एरो एरोजन लगा सकती है एक बार के लिए, लेकिन जानी कुछ नहीं कर सकती बिना उसके, तो जानी इज प्रीटी मच यूजलेस विदाउट फीबी मेरे हिसाब से। तो कार्लोटा कार्लोटा भी विदाउट जेजी इतनी स्ट्रांग तो नहीं है, काम चल जाता है लेकिन स्ट्रांग तो नहीं है इतनी। कमीलिया सैनवा ऑलवेज बेटर, रोशिया से भी बेटर, ठीक है। तो कमीलिया एंड ऑगस्टा ही ऐसे कैरेक्टर हैं जो मेरे ख्याल से अभी चल सकते हैं। जियान
जियान विद दैट मोटिव फकिंग गाय, ठीक है। उसके अलावा तो ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं है जो आप चलाओ। ये इसके लिए भी आपको चाहिए होगी यिनलिन, ठीक है। The impatient ones will fall right जियान के लिए मोटिफी, जिनसी के लिए आपको एक चाहिए ही चाहिए। बेसिकली आप मोटिफी के चला सकते हो, ये भी ऐसा नहीं है, बट फास्ट कंसल्ट एनर्जी एंड सब कुछ मैटर भी करता है, ठीक है। बफ रन आउट नहीं होने चाहिए, तो वही चीज़। और तो क्या ही है, चांगली का बता दिया मैंने। शोर कीपर इज अ मस्ट फुल कैरेक्टर, मस्ट हैव कैरेक्टर। मेरे को लगता है अब टाइम है कि इन लोग को एक और सपोर्ट दे देना चाहिए अब, पता है, क्योंकि हर टीम में शोर कीपर एंड मोस्टली टीम से शोर कीपर चाहिए तुम्हें, शोर कीपर या फिर वरीना। ऑगस्टा यूनो टीम में मोल्टेवी चाहिए, शोर कीपर वरीना चाहिए। प्रोलोवा कैंटेला टीम में तुम्हें मोल्टेवी सॉरी शोर कीपर वरीना चाहिए। कार्टेरिया की टीम में नहीं चाहिए, कार्टेरिया सियोकुना और वो सेम रहते हैं क्योंकि, एंड लूपा ब्रांड वाली टीम को छोड़ के बाकी सब में तुम्हें सियाकोना एंड नहीं शोर कीपर एंड वरीना चाहिए ही चाहिए। चैट 1 मिनट कॉल आ रहा है। इस दिन का था इंतजार हो गया। वरीना हीलर है और थोड़ा सा अटैक बफ भी देती है टीममेट्स को। वरीना मेरे पे पड़ा हुआ है 70 लेवल का, मेरे पे पड़ा हुआ है अभी। जैसे आप शोर कीपर है आपके पास? ला 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 ला, तो 4 स्टार यार, 4 स्टार में काम करना चाहिए यार इनको भाई। वर्जन रिलीज करो ना इनके यार। ये 4 स्टार के कितने वर्जन बना सकते हैं भाई? सोलन क्यों नहीं सुन रहा भाई? पीवी का 4 स्टार वर्जन बना सकता है, कैंटेरेला का 4 स्टार वर्जन बना सकता है, यूनो का भी बना ही सकता है, थियागोना का बना सकता है भाई। लोग कैसे यूज करेंगे यार कुछ भी? सबके 4 स्टार वर्जन बन सकते हैं आराम से एबिलिटी में। जैसे यूनो पे ईआर रिक्वायरमेंट यार 120 के अराउंड चाहिए होगी, 121 आई गेस। मेरी थोड़ी कम पड़ती है। नहीं थोड़ा मेरा थोड़ा कम पड़ता है यार, ज़्यादा चाहिए होगा आई गेस। एक मिनट, लिबरेशन कितना है इसका? 125 कॉस्ट है, 130 के करीब आई गेस इज इनफ। वैसे इतने में आ तो जाता है क्योंकि शोर कीपर भी रन कर रहा हूँ ना, तो वो तो आ ही जाता। हाँ फिर आ जाता है। 125 to 130 आई गेस काफी है। इतनी प्यारी है ना यू नो। ओह स्पेस दबाओगे तो तुम वो होते रहते हो राइट, तुम्हारा ये चेंज होते रहता है इसी। एक बार बिल्ड दिखाना, मैं मर जाऊंगा बच्चियों। मेरा तो ये है फिलहाल 70 to 79 127 लिबरेशन चाहिए मेरे, लेकिन जो एकोज आए हैं उसी में रहते सिग्नेचर है।
सर लिबरेशन किस में आया ही नहीं मेरा तो। स्टोर कीपर क्या बफ देती है? स्टोर कीपर बेसिकली आपका ईआर बढ़ा। ओ इसमें मैं चल नहीं सकता चैट, देख रहे हो? जितना मैं सेंटर पे जाते रहूँगा केओस मुझे पकड़ लेता है। ओके दैट्स गुड। तो हाँ, श्योर कीपर आपका ईआर बफ करती है और क्रिट रेट और क्रिट डैमेज बफ करती है जब भी आप उसके डोमेन में रहते हो या फिर उसका डोमेन एक्टिव रहता है, समझे? ये सीन है। कहाँ है वो लॉन्ग में? क्या हो गया? ओके लेट्स आई गेस मैं दैट्स इट करूँगा 5 बजे तक ही करूँगा स्ट्रीम में अभी के लिए, अगर शाम को उधरिंग वेव्स का हुआ, क्योंकि मुझे करना तो है कंटेंट। नाइट में नेक्स्ट मैंने कर दिया है। एसेट फार्म इसका कर लेता हूँ लाजा। At your disposal. Diminish. Loading. थैंक यू इतना हेल्प करने के लिए, बहुत बढ़िया रहेगा अगर एकदम बढ़िया एक बुआ गाइड बना दो। मतलब बुआ गाइड यार मैं ट्राई करूंगा कीप अप करने की, और क्या। Causality, on you go. Fight by my side. Invincible. बना देंगे, उसमें क्या है। मुझे पता है बहुत मेहनत लगता है, पता है, फिर भी हुआ गाइड कैसा गाइड कह रहे हो? मतलब बिगनर्स गाइड की बात कर रहे हो क्या? हैं? The moon is full. World at my strings. Future. Conquest begins now. Roars of conquest. यस ओह, अब बिगनर्स गाइड कब बनाऊंगा पता है मैं, टू बी ऑनेस्ट? जब नया रीजन आएगा उस टाइम पे वर्थ इट रहेगा वो, टू बी ऑनेस्ट। अभी तो एक ही पैच बचा है, 2.7 आएगा 2.8 के बीच मिड में या फिर 2.8 के एंड में, ये उसी टाइम बनाने में फ़ायदा। ओह डैम, देख रहे हो इसका डोमेन एक्टिव है तो कितना अरे यार कितना सुंदर लग रहा था चैट वो 3.0 में। हाँ तो उसी टाइम बनाने में वर्थ इट है, क्योंकि लोग उस टाइम काफ़ी ज़्यादा ज्वाइन करते हैं नए रीजन जब आते हैं वो, क्योंकि काफ़ी धाड़ से प्रमोशन होता है ना इन लोगों का, तो काफ़ी नए लोग ज्वाइन करते हैं उस टाइम पे। तब तक देखता हूँ, अगर कैरेक्टर गाइड ही मैंने टाइम में डाल दी तो वही बहुत हो जाता है मेरे लिए। रेगुलर होना है बस मुझे, अभी फोकस ही है मेरा, अगर हो सकेगा तो, नहीं तो वीडियो ही कहाँ रेगुलर आ जाए वही बहुत। साइबर बैंक गुलाब, यस सर, साइबर बैंक गुलाब में तो और भी लोग आएंगे काफ़ी यहाँ एक्चुअली, है ना? अब देखते हैं। चलो यार दैट्स इट फॉर दिस स्ट्रीम भाइयों, मिलते हैं कल या फिर शाम को जब भी है। कल तो मैं यार कल से मैं थोड़ी लंबी स्ट्रीम करूँगा मे बी, क्योंकि एक तो नवरात्रि स्टार्ट है, मेरे पे कुछ बिल्कुल ही करने को नहीं रहेगा मोस्टली टाइम, क्योंकि मैं भी फास्ट रखता हूँ और मैं पढ़े ही रहता हूँ मोस्टली उन टाइम में। ठीक है, तो मैं कल से सेल्फ सॉन्ग जितनी बची है मेरी, तो 3-4 दिन में ट्राई करूँगा ख़त्म हो जाए, फिर उसके बाद बुदरिंग वेव्स ये सारा का कंटेंट क्लियर करके फिर देखता हूँ फिर क्या करना है। और साइबर बैंक लैब बिगनर मेरा यूनियन 52 ऐसा कुछ है, पर मुझे कुछ नहीं पता गेम के बारे में। मैं अच्छा कुछ पता है और कुछ मैं ऑलराइट, सी यू नेक्स्ट टाइम, ओके। ठीक है, तो हॉलो नाइट सेल सॉन्ग कल कंप्लीट करूँगा, क्योंकि मैं ब्रेक ही मान लो हॉलो नाइट सेल सॉन्ग से मज़ा बहुत आ रहा था, लेकिन फिर इतना खेलने लग जाता हूँ ना कि आंखें दर्द होने लग जाती हैं मेरी।
तो बाकी यार प्रिंस भाई मैंने बिगनर गाइड एक बना रखी है, अगर आपको देखना हो तो। जब वो रिलीज़ हुआ था उस टाइम पे बनाई थी मैंने, है ना। थोड़ा नीचे होगा, डेटा बैंक के बारे में, कॉम्बैट गाइड के बारे में, और जो जो मिस्टेक्स ना करें वो सब बताया था। तीन तीन वीडियोस बना रखी है मैंने, वो देख लेना अगर आपको वो होगा तो, ठीक है। बाकी स्ट्रीम्स पे पूछ सकते हो बेसिकली, हाँ स्ट्रीम पे आके डाउट्स पूछ लो स्ट्रीमर, या फिर डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो फॉर मोर क्वेश्चंस, वी विल हेल्प यू आउट। हाँ बाकी लोग भी क्या बोलते हैं, जो भी चैट पे बैठे रहता है सब लोग हेल्प कर देते हैं कुछ ना कुछ से ना, तो वो देख लेना। और क्या, सिंपल, दैट्स इट। चलो अभी मैं चलता हूँ, ठीक है। शाम को अगर हुआ तो, नहीं तो कल मिलते हैं। तब तक टेक केयर, बाय बाय, हैव फन, गुड नाइट, सही स्वीट ड्रीम्स।